Hello, hello, hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और yes, that was quick. That was real quick. और इसीलिए हम आ गए भाई इमरजेंसी स्ट्रीम के साथ. हाँ, it was planned to be later on. मैं सोच रहा था भाई Watchalong करिए for Europa League or what not. But for people out there, yes, मैं last few hours से नहीं कर पा रहा था in terms of stream and काफी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे. But we are here now because breaking news आ गया है. And I'm hoping यार लोग आ जाए. Not just that, do not forget to hit that like button because yes, definitely there is a थोड़ा सा मतलब carry over for last 24 hours है in terms of Tuchel. लेकिन द बिग न्यूज आपको दिख ही रहा है भाई पीछे मेरे. एंड नॉट जस्ट दैट, दिस इज ब्रेकिंग न्यूज कुछ ही घंटे पहले. और हम देखेंगे व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट पॉटर माइट ब्रिंग to Chelsea in terms of tactics, in terms of basically squad, in terms of जो backroom staff वो लाएंगे नहीं लाएंगे versus basically जो Tuchel का था. We'll kind of compare and see what are possibilities, and of course थोड़ा बहुत और आया information about Tuchel, so we'll get there as well. And यहाँ पर obviously the breaking news being, और of course भाई मैं shout out देने वाला हूँ सब लोग जो join किए for another reason as well. Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new head coach. Yet again, a head coach and not a manager. Joining us on a 5-year contract, though, to bring his progressive football. Remember, his progressive football and innovative coaching to the club. Very important. वो bold letters में है. Potter is one of the most exciting coaches in the game, starting his journey in Sweden and then moving, to England. And of course, he's 47-year-old. By the way, उनका एक साइकोलॉजी में भी डिग्री है और वो मैंने कहाँ एक्चुअली देखा. मैंने देखा in basically the show that I was lucky enough to be just half an hour ago, 1 hour ago. By yes, I was on Sony TV again. Shout out to Joby, who contributed to that. Absolutely, much kind of an honor for me to be there. For people who missed out, इसीलिए मैं वहाँ डिस्कस कर रहा था और हम लाइव नहीं आए थे 2 घंटे पहले. Absolutely. And yes, जो मिस आउट कर रहे हैं भाई वापस से देख सकते हैं. You can see I have shared the link on my community page और हम वापस से हो सके तो क्लिप्स भी डालेंगे. लेकिन we discuss a lot about beat Tuchel और beat Potter. हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. अली गेमिंग बिग अप, कैसे हो भाई, कैसे हो? Lots to discuss of course. Nutcrackers as well, proud of you. अरे proud of you as well यार. Again, like I say, I am just one among you. It's just one of us. To be very honest, it's an almighty family. मैं हमेशा बोलता हूँ, I really literally mean it. And I think again big shout out जाता है to Syed. Of course Darren को भी absolutely भाई, all the members in the house, but even all subscribers. लेकिन Syed especially because आज क्योंकि Syed ने call in भी किया था, if you remember, and you'll see what he asked, and very interesting question that he asked. Priyanshu here, yes. Farhan, yeah, absolutely. मैं सोच रहा था भाई ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस पे करूँ क्या, लेकिन अगेन कल रात को किया तो भाई ज्यादा लोग आए नहीं थे for whatever reason. तो I thought it's better to come here now and kind of share because again it's Almighty Blues, तो थोड़ा सा as in blue oriented यहाँ पर रहता है. But of course भाई विराट कोहली finally has got that for cricket lovers out there. हेलो अंकित भैया, आज तो कोहली का 100 भी आ गया. बिल्कुल यार, आज अच्छा दे रहा RCS, what I would say. But यार nice to see RCS, बहुत दिन हो गए. Rishikesh, time has come for Klopp sacking. Well, I don't agree, लेकिन again we'll get there अगर time permits. विराट कोहली, या बिल्कुल सब लोग विराट कोहली बात कर रहे हैं. Again, it's more about him getting in form really. अंकित भैया, ये हैरी पॉटर के ब्रो है क्या? वही है, हैरी पॉटर ही है. मैंने पोल में भी डाला था आज. क्लॉप का टाइम भाई, मतलब वही है लाइन से. इज इट गोइंग टू बी इन्फेक्शियस टू लिवरपूल? एंड विल talk about other things as well because Europa League मैच भी शुरू होने वाला है from what I remember. एक आर्सेनल का मैच है आधी घंटा में. मैक एलिस्टर will come. Potter want him in January market. चलो ये स्टार करके रखते हैं. We'll talk about जो आ सकता है, जो फिट हो सकता है in Potter system. ठीक है, हम देखेंगे what he did in Brighton, वो भी देखेंगे. We'll try and share the screen. Asking both fan base and owners, if you have hire Potter, give him minimum 3. Well, again, अभी तक सच में बोलूं, मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर क्विकली. Yes, definitely we have to welcome the new manager, no two ways about it. लेकिन honestly मैं बोलूं अभी तक वही है, मतलब has he really got that excitement that probably I expected maybe when Tuchel was hired? Probably not that मैं इतना excited तो उस समय भी, to be honest. लेकिन हाँ, it's probably little lesser. लेकिन expectations low रखिए, मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ. Of course, if he kind of overperforms, by it's brilliant. It's a long-term contract. Boehly and को क्या करे भाई, clean slate से शुरू कर रहे. That's what they're doing. Looks like Marina गई, Bruceberg गए, Peter Cech गए. Then of course we had I think what it was what's his name यार, मैं वापस भूल जाता हूँ. Scott McLennan, जो basically international scouting head है. He went, obviously Robben was the first one to go. तो भाई अभी Thomas Tuchel going is a clean slate. अब नया शुरुआत है.
लेकिन क्या ये नया शुरू था मेरे लिए, बिकॉज मैं जस्ट टू शेयर विद यू एज अ कंटेंट क्रिएटर, एंड यस आज मैं ऑन पर्पस आई एम कमिंग अलोन बिकॉज आई हैव टू शेयर अ फ्यू एक्सपीरियंसेस आल्सो. देखिए यार, एज अ कंटेंट क्रिएटर I won't lie. Again, there is an organizing, kind of way that you create thumbnails. आप create करते हो descriptions and all that. तो मैंने एक फोल्डर बना रखा है मेरे सिस्टम में, ठीक है. तो वहां पर है मैनेजर्स फोल्डर, ठीक है. तो मैनेजर्स के बेसिकली जो भी डेटा या पिक्चर्स है, वो ऑल दोस थिंग्स आई हैव केप्ट इन दैट. तो मैनेजर्स फोल्डर में एक है पूरा दैट आई नॉट केप्ट इट एज चेल्सी, आई हैव केप्ट द नेम एज टीटी, थॉमस टुकल, एंड द अदर वन इज नॉन चेल्सी. आप देखिए, तो फॉर मी थॉमस टुकल वाज चेल्सी इन रीसेंट पास्ट. तो अगेन आज मैं बना रहा था, यही थंबनेल का एग्जांपल दे रहा हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है. तो ये जो पिक्चर मैंने डाला है ऑफ आई थिंक पॉटर, अगेन बाय डिफॉल्ट मैंने डाला था नॉन चेल्सी में. कैन यू बिलीव इट? यस, इट पेन्स मी टू से इट, लेकिन मैंने बाय डिफॉल्ट डाला नॉन चेल्सी. मैं ढूंढ रहा था कहां गया भाई पिक्चर, कहां गया, एंड देन फाइनली आई फाउंड नॉन चेल्सी, बिकॉज एज ऑफ टुडे मॉर्निंग ही वाज स्टिल नॉन चेल्सी, ठीक है. तो वो था, मतलब अगेन have I really related to that yet? Not yet, लेकिन it will come. Definitely भाई मैं back करूंगा, आप लोग भी back करिए, लेकिन we'll be talking a little bit about Thomas Tuchel because again, let's be honest, we've not moved on 100% अभी तक. And yes, congrats, yeah, thanks यार अभिनव, बिल्कुल बिल्कुल, big up to Lucy as well. Yeah, absolutely, Ayush, Heather as well, Ankit Jha, well, बहुत बहुत लोग खुश यार उससे, nice to see that. मैं तो खुद ही विराट फैन हूं बहरीन में. टूकल के अंडर चेल्सी में जो प्रॉब्लम था चांसेस को गोल्स में कन्वर्ट करने का, सेम प्रॉब्लम पॉटर का ब्राइटन में भी था. वही है, हम डिस्कस करेंगे व्हाट हैज बीन हिज रिकॉर्ड. हाँ, तो लॉट ऑफ इट डेटा में लाऊंगा यहाँ पर, देखते हैं आप लोग क्या बोलते हो. इंटरप्रेट्स ऑफ पैथेटिक, बिल्कुल बिल्कुल. राहुल इन द हाउस अगेन, काफी लोग आ गए, फरहान, प्रेम, नटक्रैकर्स, तन्मय, जस्ट स्पोर्ट्स ऑफ कोर्स, बिग शाउट आउट भाई गुरशन के लिए भी. अरे बिल्कुल बिल्कुल यार, शायद बिग अप यार आपको, एब्सोल्युटली बिग अप, एब्सोल्युटली नॉट जस्ट यू, एवरीवन हु सपोर्टेड मी टिल डेट एंड विल बी सपोर्टिंग मी, आई एम प्रीटी श्योर इन इयर्स टू कम, ठीक है. इंटरिम मैनेजर, देन आफ्टर द वर्ल्ड कप गो फॉर एनरिका मैंचिनी. मैं भी यार काइंड ऑफ सोच रहा था कल, रिमेंबर मैंने एक आइडिया दिया था अबाउट व्हाई नॉट हैव लेजेंड्स लाइक टेरी एंड जोला काइंड ऑफ टेक इट टुगेदर, ब्रिंग इन ड्रॉगबा एज वेल, तीनों साथ में चले 2-3 महीने के लिए ये बात, लेकिन अगेन थिंग्स माइट हैव गॉट वर्स, इसलिए जल्दी किए. बट एनीवे, तो यहाँ पर I'll move on थोड़ा and I'll come back to the comments. Absolutely भाई, आशीष, अंशुल, इंद्रानील, श्रीमती, again if I'm sorry if I'm not able to take your name, of course Timo Werner, मीनू as well. लेकिन भाई क्विकली मैं यहाँ पे पहले रिएक्ट करूंगा. देखिए यार, मतलब as much as we say that एक नया रेजिम ला रहे हैं, एक नया बेसिकली एक फुटबॉलिंग फिलोसफी ला रहे हैं, what is it that basically he brings to the table in terms of record, और यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा because we have to see what he brings. तो यार, will that be enough to kind of get the respect of all the players? क्योंकि याद रखिए, चेल्सी फुटबॉल क्लब, इट इज अ क्लब जहां पर प्लेयर पावर इज अ थिंग. आज के दिन में भी यस, न्यू मैनेजर बाउंस रहेगा, वो कोई भी क्लब में रहता है, लेट्स गेट इट राइट. लेकिन एट द सेम टाइम you have to be truthful and say that nahi, after a certain time it is basically hota hai relationship with the manager as well as basically that ek respect for the manager. And I don't know, I'm hoping that it doesn't come to that, क्योंकि मुझे याद है back in the day of Avram Grant, पता नहीं आप लोग कितने रिलेट कर पाओ. Avram Grant on paper, ठीक है, he is one of the top 5 Chelsea managers as per record. It's for real, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप चेक कर लीजिए in terms of winning percentage. लेकिन इन टर्म्स ऑफ बेसिकली एक रेस्पेक्ट था ना, आई फेल्ट दैट यस, चेल्सी डिड वेल ड्यूरिंग हिम, लेकिन इट वाज ऑलमोस्ट लाइक हमारे पास 4-5 नेशनल टीम कैप्टन्स इन द टीम, they were managing the team. It was almost like that. Rafa Benitez, almost same thing. So I think that is the thing that it might come to, which I don't want. I want him to have a proper voice when it comes to everything on the pitch and off the pitch as well. जो Berlin को expect करे, despite that they're calling him the coach and not the manager. But people, this is what the record is. आप देखिए, yes, you would say on paper 51%, 41%, 31% win is atrocious. लेकिन let me honestly share with you, भाई देखिए, ऑस्टरसन जो थे ना, वो 4th डिवीजन पे थे, he got them up 3 बार, and then probably not only that, they won against Arsenal if I remember right in one match in the Europa League if I'm not wrong, ठीक है. तो फिर स्वानजी चैंपियनशिप आप जज कर सकते हो, probably not. ब्राइटन, yes you can. ब्राइटन में he finished 16th and 9th, which is absolutely not एक बोलता है ना वाव फैक्टर नहीं है. लेकिन जैसे आई थिंक आई फॉरगॉट द नेम अगेन, बट किसी ने बोला था इन द चैट दैट इट वाज अबाउट ब्राइटन नॉट फिनिशिंग ऑफ चांसेस, एंड दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजन जो वो सेकंड सीजन में भी 16 फिनिश किए. लेट मी नो व्हाट डू यू ऑल थिंक.
about that record in itself. And generally speaking, Graham Potter straight out of London transferring his sorcery from अरे भाई देखते हैं भाई anyway well let's see मतलब उस पर आएंगे absolutely tactics पर भी आ रहे हैं भाई Darren absolutely Mikhail as well big up absolutely you left out 4-4-3 in the poll भाई exactly but if people wondering भाई 4-4-3 क्या है भाई people 4-4-3 is basically again no pun intended लेकिन यूरोपा लीग की बात हो रही तो थोड़ा सा बनता है यार मजाक और मजाक ये भाई 4-4-3 is basically when we are playing against Manchester United in a 4-4-2 well, man, obviously Maguire is going to play for us. You know, let's be honest about it. Maguire shouldn't nahi kar raha. They've started well, so no. Bhai, Ankit, control yourself. Control yourself. What about 4-3-3? Yeah, why not? Why not? Absolutely. Do you think Rams Chelsea's stint will affect his chance for England's job? Well, abhi to England's job is out of the window, bhai. नहीं दे रहे वो क्लियरली उनके पास एक ऑप्शन था इन द लास्ट 12 to 18 मंथ्स जहां पर आई थिंक टॉटनहम से बात चल रही थी एंड ऑफ कोर्स इंग्लैंड से मतलब बार चल रहा था भाई व्हाई नॉट हिम आफ्टर साउथगेट एटसेट्रा अगर वो चाहते थे ही कुड हैव वेटेड कम ऑन ब्राइटन एज एट दिस पॉइंट इन टाइम दे आर हाई इन द टेबल सो आई डोंट थिंक वहां पर यू नो इट वुड हैव मैटर्ड मच बट एनीवे coming back to obviously comparison of the stats agar aap if you're a statistician really again talking about percentages bhai it is nowhere close like this man really still despite जो लास्ट 15 गेम्स में दिखाने वाला हूं आपको लास्ट 25 गेम्स इनफैक्ट भाई ये रिकॉर्ड था इनका मतलब आप बोलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन द कमेंट्स टिल व्हेन विल ग्रैम पॉटर लास्ट will he last the 5 years which is a very big question probably answer is no लेकिन will he even last half of that that's my main question even 2.5 years which is not an average for a Chelsea manager in the last 10 years क्या वो रह पाएंगे that is the biggest question yes Todd Boehly wants long term with the new manager but अब देखते हैं will he be able to manage the egos in whether he'll be able to match this record as well लेकिन वो ये थॉमस टुचेल अगेन फॉर पीपल हु मिस्ड आउट यस्टरडे स्ट्रीम्स यार ये उनके लिए particularly आप देखिए just kind of recapping as to why people might be still disappointed with Thomas Tuchel sacking मैं खुद हूं मैं झूठ नहीं बोलूंगा अभी तक I have not kind of related to the fact that we have Graham Potter already man as a Chelsea man ठीक है लेकिन it's a reality और reality क्यों है this is probably the reality of it ये है main लास्ट 25 गेम्स आप देखिए जस्ट चेक आउट द रिकॉर्ड भाई लैम्पार्ड का लास्ट 25 गेम्स बेटर था और नॉट जस्ट दैट इट्स आल्सो अबाउट ऑफ फील्ड एक्टिविटीज वेदर ही वाज इंटरेस्टेड इन टेकिंग लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी और नॉट एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स अब पॉटर वेदर ही हैज एक्सपीरियंस टू डू दैट अगेन जूरी इज आउट मेरे लिए अब देखते हैं सर मुझे लगता है पॉटर प्रॉपर इंग्लिश रेजिम वाली तैयारी करेगा प्लेयर्स को वो प्रोफेशनल टेक्निक्स और मशीन वाली नहीं प्रॉपर वेल यू नो व्हाट आशीष एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया दैट ही इज इंग्लिश अब if you actually see has an English manager won the Premier League no is he something अब records are meant to be broken आप बोलोगे but even for Chelsea who was the last English manager who did decently well Lampard again before Lampard who was it आप बोलिए मतलब again there are a lot of question marks in that aspect लेकिन would I go with geography no क्योंकि इसके पास European experience है not at the top level लेकिन थोड़ा सा है having said that ठीक है should have the pressure what Tuchel had well he will have lekin he will not get 7 games he'll probably get about 17 games I would say okay let's put it that way the minimum just putting a number out there and yes absolutely bhai sab log main bhul gaya like kar dijiye aur yes by the way for people again who missed out the Sony TV episode again thanks to Sony Television of course everyone involved on the great panel that there was but also मैंने लिंक डाला है in the description below it's the last line in the description I guess लेकिन definitely लिंक डाला है in case you missed out community post भी है I think we should do a collab video on it बिल्कुल यार hopefully in the future we do just sports absolutely shout out है आपको भी 31411 भाई साहब राहुल 352 चलो देखते हैं अभी टैक्टिक्स में आ रहे हैं नेक्स्ट if managers at the heart of club players remain in discipline look at Liverpool City Sir Alex की United Zidane great point Indranil what will Potter do with when Lukaku yeah Darren ने बहुत अच्छा question कल in the members group पूछा था and I knew that this is something that's going to come up again everyone do let me know did Lukaku leave only because of Tuchel क्या लगता है it was only because of Tuchel or was it the fact that bhai he actually genuinely doesn't fit in the way Chelsea has been playing over the years I know we can change the system और 3-5-2 खिलाते हैं Potter we can go that जो वो इंटर मिलान में खेल रहे हैं but do you see that और the fact that वो खुद realize कर दिया था after a point भाई Premier League मेरे लिए नहीं है मतलब मुझे तो लगता है he might not do well in Premier League anyway to get rid of him get a new thing I know window में हमने 280 million spend किया है
and we'll probably spend another 120 million in January. Lekin it is what it is, right? Not that we have not in a change of managers as well. We shall see what he has for us. Absolutely, Mr. Rina, big up to you. Absolutely, मतलब it is time is out. हम हमें देना है time, and then based on basically his tactics. एक होता है ना, again मैंने बहुत अच्छा चीज किया सोनी टीम में, learn कि भाई he has a psychology degree, so that will probably help him hopefully getting that better man management जो towards the end Tuchel lose कर रहे थे, which most of the managers do towards the end. Let's be honest about it. हेलो अंकुश, कैसे हो? अरे नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम भाई, कैसे हो भाई? मेसी शाउट आउट है आपको, मेंबर ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी एज वेल. हाउ पॉटर प्लेज प्ले, प्लीज डिफाइन टैक्टिक्स. चलो टैक्टिक्स में आ जाते क्विकली. तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ what has what has he done in the recent past. Again मतलब you might मतलब take it with a pinch of salt people. और हम चेल्सी की मतलब स्क्वाड भी देखेंगे, what Chelsea kind of brings, what are the options for him, can he replicate that Chelsea में भी. लेकिन in terms of देखिए, अब recent ब्राइटन जीती लेस्टर के साथ 5-2, ठीक है. In my opinion, that is probably the tactic that is probably first choice for Potter आज के दिन में. हाँ, कोई फर्स्ट चॉइस फिक्स्ड है नहीं उनके लिए, ये भी एक चीज मैं बोलना चाहूंगा. लेकिन प्रीटी मच श्योर दैट दिस इज समथिंग जो वो देख रहे हैं, कंसिडरिंग कि चेल्सी 3 द बैक खेलती है. आई थिंक दैट इज अ स्मूदर ट्रांजिशन. हाँ, मैं तो आई एम द एडवोकेट, मैं तो बोलते आ रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया. नॉट दैट आई डोंट लव टुकल, आई एब्सोल्युटली लव हिम टू बिट्स. लेकिन द फैक्ट बीइंग दैट हमें जाना चाहिए था 4 द बैक क्वाइट अर्ली दैन जस्ट दिस सीजन. लास्ट सीजन टुवर्ड्स एंड उनको बहुत बढ़िया चांसेस थे कि भाई गो मोर फॉर द बैक, लेकिन नहीं गया उन्होंने. बट एनीवे, ये देखिए, दिस इज व्हाट इट इज. आई होप यू गाइस आर एबल टू सी. तो आप देखिए 3-5-2 गए थे इन द रिसेंट गेम, एंड दिस इज व्हाट मेजरली इट इज. अगेन वेलबेक एंड एम्बेपे आर पीपल who are like, one is someone who runs behind, or one is someone who has a lot of strength. So in that case, does Chelsea have the personnel आज के दिन में? One who runs in behind, you can say Aubameyang, and one who has a lot of strength is Havertz. So can this be a solution, or you would say a 3-4-1-2 with maybe one in behind Havertz and Aubameyang, and that could be your Mason Mount or Raheem Sterling. Ideally Raheem Sterling, definitely मैं बोलता हूँ. Left wing back again, Kukurea is there, Chilwell is there. Bhai, those are options. Right wing back again, you have the same options. That is one thing जो आप बोलोगे. But again, he has other tactics as well. This is not the only one. आप बोलिए, what is the tactic that you would like to see Potter do at Chelsea? And of course हम discuss करेंगे second tactic भी. In terms of basically the midfielders, अब यहाँ पर if you remember, he used to have a Bissouma, he has a Moises Caicedo. अब वहां पर अच्छा ट्रांजिशन किया उन्होंने. So that means that he is not too dependent on the player, he is dependent on the type of player. और I would say लेफ्ट फील्ड थोड़ा कि इन अ वेरी स्ट्रेंज वे ज़ाकरिया का बहुत अच्छा चांस है भाई फीचर करने का. लेट मी नो, बिकॉज वो ब्राइटन का जो वे है, इफ यू सी द मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम फॉर एग्जांपल, प्रेस काफी ज्यादा है, एट द सेम टाइम दे हैव अ प्रॉपर डीएम इन प्लेस. ठीक है, तो वहां पर डोंट यू थिंक दैट मोर देन अ जॉर्जिनियो ही माइट गो विद बेसिकली ज़ाकरिया एंड हैव मोर एक्सपीरियंस ऑन द पिच. जनरली 3 द बैक में यू कैन आल्सो फिट इन थियागो सिल्वा, एस्पिलिक्वेटा, वन और द अदर, और एंड कुलिबाली ऑफ कोर्स. तो वहां पर ही कैन काइंड ऑफ डू गो द टुकल वे, मतलब ट्रस्ट द सीनियर प्लेयर्स. लेकिन शायद ही जॉर्जिनियो खेलेंगे द वे दैट ब्राइटन यूज्ड टू प्ले. अगर लुकाकू वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया तो बर्ली शायद लुकाकू को सेल नहीं करेगा. नहीं, एक्चुअली अच्छा किया तो भाई उसका वैल्यू बढ़ जाएगा. सच में बोल रहा हूं मैं, तन्मय, थोड़ा सा बढ़ेगा. तो आई थिंक इट्स प्रॉब्ली मेक सेंस टू सेल हिम बिकॉज he didn't fit back in the Premier League and much as Chelsea system, as much as you would blame Tuchel as well, in my opinion. Okay. In my opinion, yes, only because Tuchel. Okay, cause of Tuchel, I guess. Okay. When you were invited panel, James and Omari Hutchins first time. आई थिंक किसके बारे में बात करें, कोई नहीं भाई. डॉन हचिंसन, डॉन हचिंसन हमारी हचिंसन नहीं भाई, डॉन हचिंसन. बिग अप टू डॉन हचिंसन. ही इज एन एक्स लिवरपूल प्लेयर as well as of course David James. Man, it was awesome, man. Again, first time it was basically Terry Phelan, second time it was डॉन हचिंसन. भाई दोनों ही बार मैं डेविड जेम्स से बात किया, दोनों ही बार John Dykes, who is my idol when you're talking about football pundit or just hosting things like that. By these are my kind of idols for sure. Hopefully someday cricket के लिए भी Almighty Sports Plus जाए भाई with the Harsha Bogle. Who knows? just staying out there. 21 million spent on Potter and his staff. Exactly. That's an extra money that they paid. Remember JT's tweet 2 weeks back regarding Potter. He should come in the back room to realize the pressure of managing a big club. अच्छा, तो यही चीज मैंने सोनी टीम में भी बोला था. देखिए Anshul and everyone in the chat, when it comes to basically the big egos, one is the big egos
सेकंड इज द बिग कॉम्पिटिशंस. अब अगर देखो यहां पर ऑल दैट पॉटर इज वन इज द कप इन स्वीडन, ठीक है, तो ही हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इन द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिशंस. So pretty sure he'll be learning on the job. That may be one of the reasons why 5-year contract मिला है. That may be one of the reasons why बर्लियन को थोड़ा सा लीनियंट होंगे कंपेयर टू टूकल. यहां पर टूकल भी यू कैन आर्ग्यू दैट भाई प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस नहीं था जब आए थे, लेकिन कम ऑन, ही वाज इन द फाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग. ही वाज समवन हु वन जर्मन कप, यू नो, व्हेन बायर्न म्यूनिख वाज देन द जर्मन कप, ठीक है, विद डॉर्टमंड ही वन इट. तो यू कैन आर्ग्यू दैट टूकल हैड यू नो ज्यादा बेसिकली इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही हैड अचीव्ड एट द वेरी वेरी टॉप लेवल. Okay, which Potter becomes Chelsea is the boy who lived well. Though TT gameplay was predictable, but the players didn't take the responsibility. Same thing can happen with Potter. Well, भाई सौरभ, पहले 2 हफ्तों में अगर हुआ ना तो यार players that definitely required to be saved. You know, there is a problem. Again, I would go back to Lampard जब टुकल से नो बदले गए थे. उस समय भी देखिए रूडिगर फॉर एग्जांपल, रूडिगर यस बैक फोर था, बैक फोर इज नॉट इज आइडियल, लेकिन भाई रोमा के दिनों में बैक फोर में अच्छा खेलते थे. सारी के दिनों में ही वाज नॉट टू बैड. आई नो ही वाज इंजर्ड बट व्हाटएवर. तो लैम्पार्ड के अंडर ही वाज काइंड ऑफ डिपिंग बिग टाइम, और फिर टुकल आए. टुकल गेव हिम दैट कॉन्फिडेंस अगेन दैट यू आर द मेन मैन इन डिफेंस फॉर मी ब्रो, एंड दैट इज व्हाट यू नो मे बी पॉटर विल डू, मे बी विद अ Pulisic because again 3-4-1-2 अगर जाते हैं, I don't think so. Pulisic doesn't fit in, so he probably needs to change it to 4-3-3 जैसे सब लोग बोल रहे थे in chat as well. Why not a 4-3-3? Ziyech and Pulisic, maybe he puts an arm around the shoulder. He is a psychological you know degree wala, so who knows that he actually gives that confidence. So that is what I would like to see. It's not about basically just you know as in living up to the expectation, but also basically you know trying things in terms of gaining that pride, gaining that confidence. जो बर्लियन को भी लूज कर दिया, रिमेंबर, तो ही इज काइंड ऑफ रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एंड बर्लियन को, तो उसको एक्चुअली बहुत ज्यादा ट्राई करना पड़ेगा. लेकिन अभी के लिए गिव हिम अ क्लीन स्लेट, उसकी कोई गलती नहीं है, पॉटर की गलती नहीं है. ही इज वन ऑफ अस नाउ, सो लेट्स गो विद दैट एब्सोल्युटली, स्पेशली चेल्सी फैंस. भाई मेरा कमेंट मिस कर दिया, कौन सा वाला भाई, शायद, सॉरी अगेन, मतलब अगेन काफी सारे कमेंट्स है. अगेन पीपल, not to say again, but we are monetized. इतने सारे लोग हैं. I'll try and take as many comments as possible. लेकिन we can always you know read super chats अगर आप afford कर सको तो, if you feel that we deserve it. भाई आप टॉप कॉर्नर पे रेगुलर आते हो क्या? भाई दो ही बार आया हूँ. तो टुवर्ड्स एंड आप देखना. लेकिन जो जोक था लास्ट में जॉन डेक से मारा था भाई कि नेक्स्ट टाइम भाई टर्मोइल में होगी चेल्सी तो आप ही याद आएंगे मुझे, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गया था again, Baba also knows this. I've been discussing this. You know, last time when I went, it was basically the time when Chelsea were getting a new owner. It was on the eve of you know Todd Boehly coming almost. और अभी as we were live भाई announce हुआ. Think about it. I don't know whether it's a coincidence. I hope that's not the case. और मैंने बोला भाई next time तो जल्दी बुला लेना, ऐसा नहीं है आप मतलब मुझे पनौती मत समझिए. Anyway, Ankit, the sacking Tuchel must have been decided years ago. Losing matches was an excuse. You know what? बहुत अच्छा पॉइंट है, बिकॉज इतनी जल्दी यार विद इन लाइक 24 आवर्स थिंग्स हैव हैपेंड. प्रीटी श्योर as much as वो चाहते थे चेल्सी आना कंपेयर टू मे बी स्पर्स यू नो प्रीवियसली पॉटर, नो डिसरिस्पेक्ट टू स्पर्स, बट क्लियरली देयर हैज बीन मोर. क्योंकि मार्क कुकुरेया जब आए थे ना उस समय भी एज पर रिपोर्ट्स टॉड बर्ली एंड को ने स्टडी किया था हाउ यू नो पॉटर गोज अबाउट हिज जॉब. गोलकीपर केपा होगा, बॉल प्लेइंग कीपर लगा, या दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. और वहां पर भाई ब्राइटन अब कहां जाएगी भाई, ब्राइटन किसके लिए जा रही है, दैट इज आल्सो वन गुड पॉइंट, स्पेशली फॉर एफपीएल मैनेजर्स, जिस पर आएंगे हम कल इन अनदर लाइव स्ट्रीम एज वेल. Fair enough. Jorginho time is over now. Yeah, as in again, he doesn't have a new contract, so I doubt if it will happen. But again, खाली leadership के लिए शायद वो लोग वो use करें उन्हें Champions League games is what I'm reckoning. You can't become a great club if you just keep sacking a manager at that tough times. बिल्कुल. Again, मतलब मैं यहाँ पर थोड़ा सा I am at the same time, while yes, definitely we have to welcome him, but we have to be a little bit, you know, as in we have to be in agreement of the fact that bhai, this was a person who actually won us those trophies which eluded us for a big time. अरे 9 सालों तक यार, it's a big time. It's a big time that we didn't have those trophies, especially the Super Cup, man. Super Cup तो हम we are losing for fun. हाँ, क्लब वर्ल्ड कप का एक ही मौका था, बट एनीवे under Benitez I kind of knew that we'll lose, and this guy's actually got us all the 3 trophies, so you have to give it to them, especially he's lost his job, so we have to be very careful about how we kind of you know emote abhi ke liye. Of course slowly but steadily bhai Potter will also feel one of us, लेकिन अब it all depends on how things go day in by day. मतलब मैं तो day by day लेना चाहूंगा अभी. Again, club bigger than anything, that's what I would say, but again
coming back to, if you have to buy, if you have to come to basically Thomas Tuchel again, one thing which always reminds me of Thomas Tuchel. Again, you might say that I'm kind of getting emotional yet again, वही same cheese, but there is a certain thing जहां पर वो 100 game था and he went to the interview saying that नहीं, I hope it's 100 more and 100 more and 100 more, and that is what maybe I'm hoping. It's not maybe, सच में मैं बोल रहा हूँ, we need a point जहां पर maybe it will be पॉटर हु गेट्स दैट कंसीडरिंग द 5 year डील. नहीं तो यार काफी सारा सेवरेंस देना पड़ेगा टॉड बॉली को, इतने पैसे भी नहीं होंगे यार, कम ऑन, देयर इज अ लिमिट टू इट, राइट? तो व्हाट, यस डेफिनेटली यार, आई होप, मतलब अगेन, ऑल आई वांटेड इज फॉर ऑल ही इज अचीव बाय थॉमस टुकल, यार बंदा थोड़ा सा और डिग्निफाइड एग्जिट डिजर्व करता था. डोंट यू अग्री? जस्ट दैट ही हैड टू मतलब गेट अ डिग्निफाइड एग्जिट. आई नो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एन ओले वाला, सॉरी मैनचेस्टर फैंस, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एन ओले वाला पोस्ट सैकिंग इंटरव्यू, लेकिन come on, you know what I mean, right? As in probably last match के पहले उनको उसको बोल देते it could have been an easier match. I know that time is money in the Premier League, especially in Champions League as well, so maybe that has happened, but again, maestro यार, proper maestro है. And we'll come back to a lot of stats as well, coming back to tactics भी हम करने वाले हैं for the second formation. Who's the most successful England Chelsea manager? Well, that's a great quiz question, yeah, Sagnik. Well, again, there have been a lot of Chelsea managers, I believe, who have over 60% win record. I know that Tuchel has 60%, and of course he's German. लेकिन in terms of English managers, बहुत ही अच्छा बोला आपने. Technically मैं बोलूँ, स्टीव हॉलैंड एक ही मैच मैनेज किए थे, वो जीते थे वो मैच. आई नो दैट्स काइंड ऑफ चीटिंग, लेकिन आई थिंक स्टीव हॉलैंड इज द गाय. लैम्पार्ड हैड अबाउट 53% विन परसेंटेज फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर. लेकिन आई थिंक ग्लेन हॉडल का तो और भी कम होगा यार, ग्लेन हॉडल का और भी कम होगा, सॉरी. I think it was probably Lampard itself. No, actually, I'm just looking it up. भाई it's William Lewis जो मैनेज किए थे 1906 और 1907 के बीच में. Wow, that's a great quiz question, भाई. Sagnik, do you think sacking Thomas Tuchel is not taken for losing? It's more than I think it's something between owner and manager fight for. You know what? It may not even be fight. It may be like जैसे आप कंफर्टेबल नहीं हो किसी के साथ काम करने के लिए, और जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो दूसरा समझ नहीं रहा, तो इट्स अ क्लियर गैप इन कम्युनिकेशन विच इज क्लियर. तो उस दौरान क्या हुआ था, टुकल इज एक्सपेक्टिंग टू बी अ कोच बट दे आर एक्सपेक्टिंग देम टू बी अ मैनेजर, और ही वाज लाइक नहीं, मैं नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ, एंड मेरी प्रायोरिटी फुटबॉल है, एंड देन कम्स ऑफ फील्ड एक्टिविटीज. और वो लोग मे बी दे वर ड्यूरिंग ट्रांसफर विंडो एक्सपेक्ट कर रहे थे दूसरा जो नाइव है. अगेन मैंने डिस्कस किया था, बिग अप टू जॉन डाइक्स, डेविड जेम्स एंड डॉन हचिनसन, तीनों ही अग्रीमेंट थे that the owners were a little bit naive there in terms of basically taking a call. लेकिन it was keep coming क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर्स ना तो समझ रहे थे वो जब बोल रहे थे इन रीसेंट मैचेस. और मैंने दिखाया था 25 मैचेस में लैम्पार्ड से भी वर्स है उनका रिकॉर्ड, तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस, राइट? वेल अगेन, I have kind of not asked him that question, have I? मतलब मैं टच में तो काफी सोशल मीडिया से बहुत सालों तक, but I think he probably supports the Singapore team at this point in time. Probably neutral, I guess. Anyway, अरे प्रकाश कैसे हो भाई? Nice to see you. 31425122 and one CDM, two creative mids and two strikers with Havertz kind of shadow. आई डोंट थिंक सो यार, मेरे ख्याल से विट इज समथिंग जो चाहते हैं. और अगेन मैं दूसरे में आ रहा हूँ, दूसरे वाला जो है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट. जस्ट गिव मी अ सेकंड. व्हाट आर चांस ऑफ ब्रोया प्लेइंग अगेन? भाई वन थिंग दैट आई एम रियली हैप्पी अबाउट, एज मच एज आई एम नॉट हैप्पी अबाउट टुकल गोइंग, कि भाई दिस इज समवन इन ग्रैम पॉटर जो इन्वेस्ट करते हैं, हु बिलीव्स इन यूथ. आप एग्जांपल देखो, चेल्सी के पास तारिक लैम्प्टी थे. तारिक लैम्प्टी लिए after seeing just one match, okay, there he went, and he has given him a lot of chances. I would say even to the extent of Kukurea bhi, you can argue that वो जब आ रहे थे गिताफे से, I don't think it came as someone जो will burst the Premier League, लेकिन he almost did that by week in week out दिया. He was a young guy coming new to the Premier League. Then Moses Caicedo, yes, he has a physicality आप बोलोगे, but at the same time confidence चाहिए भाई. Could मतलब ये argument है. Why didn't Thomas Tuchel give Zakaria a chance in Europe in the first match? I'm just putting it out there, even from the bench. I know हम chase करते game, but at some point you would buy that. और वो revive भी करते careers. Talk about reviving careers. Danny Welbeck. So I won't say that वो totally youngsters पर ही है. I think one guy that is really improved as a player, और improving player जो होता है ना, coach जो क्लॉप करते हैं, arguably lot पेप करते हैं, वो चीज पॉटर करते हैं. वही चीज आपने देखा है विद Trossard at this point in time is a surety in the national team. Bhai. He's become that good.
Trossard was nowhere near the national team. अब देखिए, एंड आई थिंक बेल्जियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 4-3-3 में माउंट, जकारिया, वेल कोवा, लेट्स सी. डू यू थिंक द मैनेजर विल बी लाइक मोइज एट यूनाइटेड, कैन ही हैंडल चेल्सी मैन यूनाइटेड फैन? वेल अगेन बिग अप भाई. मैं सोचता हूं कि भाई दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन द लॉन्ग टर्म अगर टाइम नहीं दिया जाए. यू हैव टू गिव इन टाइम. दैट प्रेशर जो होता है ना वीकली, भाई आपको सैक इज ऑन द हेड, मतलब इट्स कमिंग, वैसा वाला चीज नहीं. It has to be given time and expectations low रखे in terms of Chelsea fans, in terms of Chelsea owners. फिर ही चलेगा ये. This is someone who's coming with 31% win percentage despite it being Brighton. Yes, can he do it in 62% जो हमें चाहिए minimum? Let's see, time will tell. अभी के लिए मैं बोलता हूँ डिफिकल्ट रहेगा. मैं तो बोला ही हो, आप देखेंगे से कम द पोस्ट वर्ल्ड कप टाइम हम देखेंगे वापस से न्यूज आ रही. आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, लेकिन आई एम होपिंग आई एम रॉन्ग. दैट इज व्हाट यहां पर मैं बोल रहा हूं. व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर डज पॉटर लाइज? अगेन इफ यू सी ट्रोसार्ड, ठीक है, ट्रोसार्ड इज समवन जो खेलते हैं लॉट ऑफ टाइम्स इन द लेफ्ट चैनल, लॉट ऑफ टाइम्स इन फ्रंट ऑफ द डीएम. तो देर आर मल्टीपल पोजिशंस दैट दे प्ले. अगेन चेल्सी के पास है प्लेयर्स ऐसे, रिमेंबर वी हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स. मेसन माउंट इज वन ऑफ देम फॉर एग्जांपल. सो आई एम प्रीटी श्योर वो मेसन माउंट को यूटिलाइज करेंगे टू द फुलेस्ट. अब आई एम होपिंग इट डजंट यूज हिम एज सेंट्रल मिडफील्डर जो लास्ट मैच में यूज किए थे, लेकिन प्रीटी श्योर वहां पर मेसन माउंट इज वन ऑफ देम फॉर श्योर. यू कैन ऑल्सो आर्ग्यू बाई स्टर्लिंग, यू कैन ऑल्सो आर्ग्यू पुलिसिक, लेकिन pretty sure वहां पर शुरुआत कैसे होगी ना, that he would probably want to give players the confidence in the positions that they're playing. एक confusion नहीं होना है, and then maybe experiment a little bit more. Again, I feel that क्योंकि 3 the back हम जा रहे थे, हाँ maybe 3-5-2 या 3-4-1-2 नहीं खिलाएंगे, but he might go 3-4-3. That's what मैं बोलता हूँ, with Pulisic and maybe Sterling White. That's what मैं तो I'm just predicting here. Especially he has to win the confidence of players जो नहीं खेल रहे थे. हाँ, Mason Mount can be an impact because anyway I think he needs a rest on merit as well. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ. भाई फुलम के साथ है, हम प्रॉपर प्रीव्यू भी करेंगे पूरे वीकेंड का कल, सो डोंट फॉरगेट दैट अलोंग विद एफपीएल टॉक्स भी. अच्छा बाय द वे, यहाँ पर मैच शुरू हो गया क्या? मैं मैच लगाया तो भाई मैच शुरू हो गया. अगेन मैं कमेंट्स में पीछे आई नो मैं आता हूँ, बट अगेन लाइक आई सेड यू कैन ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर कमेंट्स एज वेल एज भाई लाइक कर दीजिए. चलो 5 मिनट हो गया यार, बहुत बहुत लेट हूं मैं. ज़ुरिक वर्सेस आर्सेनल का 5 मिनट हो गए. मैनचेस्टर यूनाइटेड का वाला मैच कब है? आई थिंक दैट इज एट 12 राइट. लेट मी जस्ट चेक इट वंस मोर जस्ट टू बी श्योर बिफोर आई मिस आउट. चलो वो बाद में है, वो रोमा वाला मैच चल रहा है मीनवाइल. चलो और कमेंट्स ले लेते क्विकली बिफोर कमिंग टू द सेकंड फॉर्मेशन. भाई ब्राइटन हैज पब्लिश्ड दैट Lallana would be interim coach for the weekend. Wow. That's a news. Sagar, thanks for sharing that. If 4-3 Sterling will fit, he has played it from City, but where will Mount Havertz? Exactly. तो Lucy, anyway मैं बोल रहा हूँ भाई, Havertz और Mount दोनों ही on merit, they don't deserve to be in the playing 11 anyway right now. तो अभी ये मौका है for him to basically try what he has tried at Brighton, or just continue what is going at Chelsea. Well, it's for time being, Samir, I believe so. Mendy has, well again भाई वो मौका तो जरूर देंगे, लेकिन द फैक्ट इज राइट नाउ, जैसे मैंने बोला अबाउट हैवर्ट्स एंड माउंट, केपा डिजर्व्स ऑन फॉर्म. तो अगर उन्होंने देखा है क्लोजली, व्हिच आई एम प्रॉब्ली श्योर, knowing him he would have studied them hard, that Kepa is probably going to start on form. If he loses form, then Mendy will get a chance. Like, I'm pretty sure it will be like Champions League के लिए अलग goalkeeper होगा, is what I'm guessing. Knowing that he's a new manager, he would like to kind of एक respect और confidence जीतना चाहेंगे, along with basically trying the best what is on merit. This is a grounded, but I'm not a hater too. भाई आशीष, मैं खुद बोल रहा था यार 31% कहाँ हम 60% देख रहे हैं, लेकिन एनीवे देखते हैं भाई, मतलब चेल्सी के साथ क्या करते हैं. लेट्स गिव हिम अ चांस, दैट्स व्हाट आई वुड से सिंपली पुट. Kukurea might become a regular, not necessarily as much as Kukurea is his player. Remember भाई वो ब्राइटन को kind of help किए in terms of getting that sum from Kukurea, but he knows Kukurea. तो एक होता है confidence level for with the player as well as basically the manager, वो एक चीज होती है. लेकिन चिलवेल आज के दिन में भाई इंग्लैंड के वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स भी है, और ऑन फॉर्म अगेन ही हैज डन इट इन द लास्ट 2-3 गेम्स मोर. तो आप बोल सकते हो भाई ही माइट यूज बोथ. एंड रिमेंबर कुकुरेया एट लेफ्ट सेंटर बैक वाज पॉटर जिसने एक्चुअली फिगर आउट किया था. एंड यस, यू कैन आल्सो आर्ग्यू दैट कुलीबाली इज एब्सोल्युटली नॉट इन फॉर्म. तो हु नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो डिफेंस तो अभी देखते हैं. मतलब आई स्टिल बिलीव दैट he will start with experience. तो experience देखा जाए तो कुलीबाली will start, Thiago Silva will start at right center back. I can see maybe he'll give Chalobah a chance, because
फोफाना इज कमिंग न्यू आफ्टर नॉट ट्रेनिंग मच, और वो दिख रहा है पहले दो मैच में. दैट इज द ओनली रीजन. मैं इस वीकेंड की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगेन फोफाना ऑब्वियसली विल बी द मैन. तो मैं देख रहा हूँ पहले ही गो विद एक्सपीरियंस ऑफ प्रीमियर लीग और एक्सपीरियंस इन जनरल, एंड विंग बैक्स he'll probably use Kukure on the one side and Reece James on the other side. मतलब he won't try to change absolutely totally ना शुरुआत में. But हाँ, I'm hoping that up front वो दो खिलाए यार wide beside Aubameyang. That's what I would say. By the way, Aubameyang has been assured कि भाई आपको जो assurances मिले थे about Tuchel, it is not about Tuchel. आपको कुछ जज नहीं किया जाएगा. You are a player, even जो Tuchel रहते या नहीं रहते, we have liked you as a scout, and that is why we have got you. So Aubameyang is okay with that. I know he is very sad on Tuchel going, but that's a fact. And talk about Tuchel going, bhai, matlab, I don't know if you saw this, but this was heartbreaking, man. Again, मैं personal experience share करो भाई. Tuchel का जो most recent picture था ना, and it pains me to say it, man, it really does. मैंने Tuchel का सबसे recent picture मैंने save किया folder में which says others, non CFC. Man, it really does pain me यार. मैं क्या ही तो बोलूं, मतलब I don't know if you guys have seen, but यार भाई, this is really saddening यार. मतलब I know it's not ideal to be for me to be showing this, लेकिन again मैं सिर्फ share कर रहा हूँ just as friend. But what do you think, man? Tuchel deserved far more respect, man. एक होता है ना एक send off, man. This guy, as much as you know, yes, it was coming and all that, आप debate कर सकते हो, but he deserved far more. अरे भाई, I missed super chats anyway. भैया Todd Boehly wants coach who he can control. I don't know about that यार. वो चाहते थे ज़्यादा इनफैक्ट. But big up भाई Dhiren, thanks for super chat. Is again the gesture which means a lot, and anything which comes to the channel, once I get it, it'll go back to upgrading the channel as always. Rahul Kelkar as well भाई, बढ़िया लगता है always to get that, because that backing tells me that आप believe करते हो मुझ में as a content creator, and that means a lot. Big shout out to Rahul and Dhiren, absolutely. लेकिन of course to Thomas Tuchel himself यार, काफी saddening है ये. Zakaria center back position में खेल सकता है at emergency moment. I don't think we need him. I don't think we need him in center back. Yes, definitely Thiago Silva is not going to play every match. लेकिन it will be managed भाई. Chalobah है. Chalobah was one जो Thomas Tuchel चाह रहे थे भाई. He's not really meant for the first team. In my opinion, Chalobah के लिए big up है. Ziyech के लिए big up हो सकता है. It can be a big up for basically Pulisic, like I said. जैसे मैं बोल रहा हूँ Zakaria might actually be one of them जो खेले that Casido role, in midfield. Who knows? Delete one Robin और काका भाई, come on. अरे नाइंसाफी है भाई. एक दोनों हाथ में से बोल रहे हो भाई कौन सा काटो, बीच में मैं टेरी हूँ खुद. I'm just kind of saying भाई ये तीनों में से I cannot मतलब if you have to really put me, like, come on. Robin is a Chelsea player. I have more love for Chelsea any day, so Robin मैं लूंगा. तो delete काका, but come on, it pains me to say it. Newcastle in advanced talk side, former Liverpool goalkeeper. Yeah, Carrier's making a comeback, people. यहाँ आप देख रहे हैं. He will play same formations. Tuchel is what Miss Eleanor is saying. You know what? Let me show you the other formation. Again, this is fairly recent, people जो भी देख रहे हैं. तो आप ये नहीं बोलोगे कि भाई, come on, he's not going to play that exactly, because उन्होंने करके दिखाया यार. And he has done well in recent weeks. So you can say that horses for courses वो believe करते हैं. मैं एक और share करने वाला हूँ as things stand. और दिस वाज आई थिंक अगेंस्ट लीड्स यूनाइटेड. अब लीड्स यूनाइटेड इज नेवर एन इजी टीम. आप देखिए हॉर्सेस, इससे टैक्टिशियन वो भी है. तो आई थिंक यू हैव अ फेयर, एक देना पड़ेगा क्रेडिट, बिकॉज द गाय एक्चुअली नोज हिज स्टफ. दिस इज व्हाट आई एम शोइंग. सी आप देखिए 4-4-2, तो प्रॉपर 4-4-2 भी खेले. अगेन यू कैन से 4-4-1-1. पास्कल ग्रोस इज नॉट रियली अ सेंटर फॉरवर्ड, लेकिन दैट इज व्हाट यू वुड से. अच्छा, सेम चीज कैन मूव इनटू अ 4-3-3. यहां पर आप देखिए यू कैन हैव 3 मिडफील्डर्स विद मे बी ट्रॉसार्ड जस्ट इन बिहाइंड वेलबेक एंड ग्रोस. वो भी हो सकता है अगर वो मार्च जैसे वाइड प्लेयर नहीं खेले. तो यहां पर किसके लिए अच्छा होगा मैं बोलूं 4-4-2. इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, in my opinion, even a Pulisic and a Ziyech can play in a 4-4-2, because more recently उन्होंने थोड़ा defensive work भी सीखा है under Tuchel. Thanks to Tuchel, they've learned a little bit. I'm sure they're not defenders really, लेकिन they've learned a little bit. तो वहाँ wing play में they can be utilized much more, Pulisic and a Ziyech. ठीक है, और we can go this way with maybe again a Sterling and a Aubameyang or a Havertz or a Mount. I mean, आपके पास काफी options है. Again midfield में जो central midfielders है, they have to be defensive. So there you need to have definitely एक ball carrier or एक vertical passer in a Kovacic, for example, and the second person can be a little bit होता है ना एक ज्यादा sturdy, एक ज्यादा मतलब physically strong guy.
वो हो सकता है आपके लॉफ्टस चीक या हो सकते हैं आपके बेसिकली जकारिया. आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर. अगेन जॉर्जिनियो कैन बी, बट इन 4-4-2 आई रियली डाउट जॉर्जिनियो होंगे. बाय वे मैच भी चल रहा है, मैं अभी भी फिर से रियलाइज किया हूँ, बट कोई नहीं, देखते हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं. प्लेयर्स लाइक जीएस पुलिसिक आर विद दैट एटीट्यूड पैथेटिक. अरे कैमी भैया इन द हाउस यार, कैमी भैया मच लव. कैमी भैया मैसेज करिए यार, मैं आपको बुलाना भूल यार कल. रियली रियली सॉरी, आई शुड हैव कॉल्ड यू एज वेल. लेट मी मैसेज कैमी भैया इफ इट्स फ्री. विल बी ग्रेट टू हियर योर थॉट्स कैमी भैया. मच लव टू यू एज वेल. ऑफ कोर्स पीपल, भाई कैमी भैया आप जानते ही है. लेट मी सी इफ कैमी भैया इज अवेलेबल एंड लेट मी मैसेज हिम. Okay. By meanwhile, people, don't forget to like the stream. Okay, let me just. Okay, I've just sent a message. Amir, let me know if you're available. अभी थॉमस तू चला गया रे भाई. बहुत ही सैडनिंग है, बट आई नो भाई. मैं झूठ नहीं बोलूंगा यहाँ पर. मैं शाउट आउट देता हूँ मेरे भाई यूनाइटेड रोड अंशुमन को भी यार. एज मच एज योर ब्रदर भाई, बैंटर चलता है और बैंटर चल रहा है प्रॉपर. मुझे पता है भाई, फुटबॉल कमेंट को भी शाउट आउट है. इनका भी बढ़िया चैनल, पीपल डोंट मिस आउट. काफी बढ़िया कंटेंट करते हैं ये. हेलो भैया, आई एम रिसेंटली जॉइनिंग. विकास मच लव ब्रो. एंड ऑफ कोर्स मानव को भी शाउट आउट है. बिल्कुल भाई, टैक्टिक्स की बात करें, मानव वुड लव टू नो योर टैक्टिक्स अबाउट हाउ ही वुड यूज दिस चेल्सी स्क्वाड. क्या आपको लगता है जकारिया और लॉफ्टस चीक विल बी यूज्ड इन डिफरेंट रोल्स देन व्हाट टुकल यूज्ड देम, और इन केस ऑफ जकारिया यूज ही नहीं किया, मौका ही नहीं मिला उन्हें. लेकिन इन टर्म्स ऑफ बेसिकली दैट विंग प्ले, do you think the best way to get out of Pulisic and Ziyech now that they've learned a little bit defensive ability is to just go 4-4-2, just go for it, have that double, एक हो ना 2 walls of 4 wall protection where defense has been leaking, or do you think it's better to go with the 3-4-1-2 or a 3-4-3 formation जो Chelsea के लिए चला आ रहा है, and we have been in a comfort zone. Wow, modern FC United Premier League champion. Well, I don't think so, but again, funnier things have happened, तो कोई नहीं. भैया if 4-3-3 केपा, कुकरेया, कुलीबाली, फोफाना, रीस, जकारिया, गैलेगर, कोवा, स्टर्लिंग, ओबा, जियश. वाओ, इंटरेस्टिंग दैट भाई. अगेन ऑन फॉर्म बोल रहे हो आप लूसी, आई एम गेसिंग दैट, इसीलिए आपने पिक नहीं किया है सर्टेन प्लेयर्स. यहाँ पर मैं क्लियरली देख रहा हूँ. भाई वेयर इज अ थियागो सिल्वा. फर्स्ट ऑफ ऑल थियागो सिल्वा यू मिस्ड इट. So basically for you, when everyone is with Thiago Silva is not starting in Fofana and Koulibaly is starting. Interesting. मेरे लिए Thiago Silva is the first name in the defense. फिर आएंगे Fofana, फिर आएंगे Koulibaly as per form as well, और as per knowing Chelsea leadership element भी. Zakaria, Gallagher भी interesting है. Gallagher I would not like to see in that position. नहीं 4-3-3 बोला ना, तो I think it's a good choice. Certainly good choice then. Thomas Frank is linked with Brighton, but he said he was, I don't think we'll छोड़ेंगे. It'll be probably unfair, right, on him. And on Brentford as well. अरे good night राहुल भाई, कैसे हो? I wish Graham Potter all the luck. अरे गोल हो गया भाई आर्सेनल का. Arsenal has scored, people. Talk about sticking with the manager, and I know it's against Zurich, लेकिन आर्सेनल ने गोल मार दिया है. एंड भाई व्हाट अ गोल मैन. भैया स्कोरर almost crying man. Who's the scorer? Let me just check. But I just saw them celebrating quickly और मैंने रिएक्ट किया है. Let me just see. भाई उसको इतना घेरे हुए मुझे दिख ही नहीं रहा भाई प्लेयर. अच्छा ये कौन है, अपना नया प्लेयर है क्या? Is he Marquinhos or what? Again, maybe I don't recognize by face. Let me see. 4-4 Ankit, just let Sterling and Cuckoo handle left wing. They will spit fire. Interesting. I didn't like the way Chelsea managed Tuchel. Trust me, no one did. But did you not expect it? That's what I'm saying. बढ़िया गोल है आर्सेनल का. मीनवाइल हेलो विकास, कैसे हो? अगेन 2009 इंटर सेल कुटिन्यो, 2010 इंटर विन चैंपियंस लीग, 2018 लिवरपूल सेल कुटिन्यो, 2019 लिवरपूल विन चैंपियंस, 2022 बार्सिलोना सेल कुटिन्यो. ओ माय गॉड तन्मय, इंटरेस्टिंग दैट. भाई बारसा के साइड हो क्या अभी? Again, interesting, very interesting one, Tanmay. Anglia for short passes or fast passes, Kukurea, and for attacking threat Chile. हाँ तो 4-4-2 अगर खिलाते हैं तो कुकुरेया, अगर वो जाते हैं 3-4-3 या 3-4-1-2, then I would say I would strongly say probably both on form, because Koulibaly is not doing the deal. हाँ मैं बहुत ही strong call है वो, लेकिन माय ओपिनियन कुलिबाली और थियागो सिल्वा वो दोनों साथ में नहीं खेल पा रहे. आई नो फॉर प्रीमियर लीग यू नीड दैट फिजिकलिटी, और काफी अच्छे प्लेयर है, इतना एक्सपीरियंस है, बट जस्ट ऑन फॉर्म में बोल रहा हूँ. इवेंचुअली वो आने वाले इन द स्क्वाड. एब्सोल्युटली ओके. नॉट प्लेइंग सिल्वा इज बिगर क्राइम देन अलोंसो प्लेइंग स्ट्राइकर. ओह माय गॉड. आई फील ग्राहम पॉटर विल यूज अ 4-3-3 फॉर्मेशन. ही लाइक्स टू यूज टू क्विक एंड इंटेंस एट्स इन द मिडल, व्हिच वुड बी कांटे, गैलेगर एंड माउंट. हाँ अगेन मानव बहुत अच्छा कॉल है. आपको पता ही है, फॉर पीपल हु आर रेगुलर इन द चैनल फ्रॉम लास्ट 6 महीनों से मैं बोल रहा हूँ
भाई गो फॉर अ 4-3-3, वी नीड टू गो फॉर डेक्लन राइस, वी नीड टू गो फॉर अ चौमनी। पूरे समर में मैंने बोला था दैट इज व्हाट द प्लेयर वी नीडेड, ठीक है। वी डिडंट गेट, फिर हमने गिलमोर को बेचा, वो भी ब्राइटन को, दैट इज द फनीएस्ट पार्ट, एट 9 million, देन वी गॉट जकारिया। अब that is the only question for me, Manav. 4-3-3, the reason I'm not as confident is because will he be confident on a Zakaria coming in and basically being that main guy from day one? वो मुझे थोड़ा सा problem है, because again Kante, I don't rate him as a a single pivot. I don't rate him that way. He's a brilliant, awesome, एक होता है ना ball गेम ब्रेकर है, लेकिन आई डोंट थिंक कांटे विल डू दैट इनफ इफ वो रहते हैं इन द मिडिल, बिकॉज हमें चाहिए समवन विद मोर डिसिप्लिन, समवन हु इज अ बेटर पासर, यस विद पेस, यस विद स्ट्रेंथ। जकारिया कैन बी दैट गाय, लेकिन वही थोड़ा मुझे डाउट है, इसलिए ही माइट स्टार्ट विद टू मैन मिडफील्ड, मैं बोल रहा हूँ सेंट्रल मिडफील्ड, दैट इज माय ओनली टेक ऑन दिस, बट इवेंचुअली आई हियर यू एब्सोल्युटली ब्रो। भाई मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि चेल्सी ने टुकल को सैक पॉटर के लिए, मतलब इसीलिए किया यार, क्योंकि यार एक होता ना अली गेमिंग। अब देखिए, अगर मैं और आप या कोई भी, मैं एक नए कंपनी में जाता हूँ, से एक स्टार्टअप है, एंड स्टार्टअप्स में ज्यादा बोल रहा हूँ, इफ पीपल हु कैन कमिंग फ्रॉम स्टार्टअप कल्चर में अंडरस्टैंड, भाई स्टार्टअप में यू काइंड ऑफ लिव विद दैट पर्सन डे इन एंड डे आउट, लिटरली। मैं खुद स्टार्टअप में काम करा हुआ हूँ एज अ डायरेक्टर, एंड आई नो दैट वी बेसिकली स्पेंट व्हाट 15 आवर्स टुगेदर डेली, 14 hours 15 hours डेली होता था, कभी कभी anywhere between 12 to 16 hours, I would say that's how bad it goes sometimes, in terms of, एक होता है ना, एक जस्ट अपना घर का समझ के, भाई एक और गोल होने वाला है आर्सेनल का, लेकिन मिस कर दिया है ओवर द टॉप, नाइस थ्रू बॉल, और यहाँ पर फैबियो वियरा थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट एनीवे देखिए, तो आई वुड से दैट ये चीज हुई है डेफिनेटली कि यार Tuchel wasn't available when they wanted, Burley wanted, he wanted that startup culture, hands on culture, जहां पर काफी चीज ले Tuchel at the helm, वो तैयार नहीं थे, he wasn't even capable, maybe, who knows, लेकिन he has handled lots, so he needed a better send off for sure। मतलब ऐसा नहीं यार, come on, जो मैंने पिक्चर दिखा, I know I shouldn't have shown, but whatever it is, United was Sociedad to hope we will break the Spanish curse today। मैंने तो prediction किया था करेंगे भाई, let's see how it goes, all the best। We have plenty of number 8 which are not being used by Tuchel, which was always disappointing, such as Mount। I also wanted us to play 4-3-3। Samir, 100% agree, मैं तो बोल ही रहा हूँ, हमारे नंबर 8 देखो, कोवाचिच, माउंट, गैलेगर, लॉफ्टस चीक, these are proper number 8s। Kante also you can argue is more of a number 8 than a number 6 आज के दिन में, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार वी डोंट हैव दैट सिंगल पिवट जो एक कॉन्फिडेंस लाए। अब अनलेस ये खुद नए हैं, अलॉन्ग विद दैट एक टोटल न्यू डीएम जो स्टार्ट करे वीक इन वीक आउट जकारिया, आई स्टिल डाउट इट, मे बी जनवरी में लाएंगे, देन वी माइट, हाँ ही माइट एक्सपेरिमेंट लिटिल बिट, अभी के लिए देखते हैं। Tuchel's sacking was a huge disappointment. Graham Potter can do wonders with Chelsea team, दिव्यांशु बोल रहे हैं, all the best to him। अरे थैंक्स यार, much big up to you as well as आदित्य, कैसे हो भाई। अगेन 4-4-2 में माउंट कहाँ खेलेगा, माउंट नहीं खेलेगा, माउंट नहीं खेलेगा, सिंपल एज दैट। 4-4-1-1 में खेल सकता है बिहाइंड द स्ट्राइकर, बट आई वुडंट वांट दैट, अगेन वो थोड़ा नेगेटिव रहेगा। फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड ही लाइक्स क्विक पासिंग, ही डेफिनेटली लाइक्स अ प्रेस एज वेल, तो वहां पर माउंट कैन बी यूटिलाइज, बट मोर एज अ सब्स्टिट्यूट इन माय ओपिनियन एज थिंग्स स्टार्ट। अभी ऑन फॉर्म तो देखना पड़ेगा, 6 गेम्स हो गए, ऐसे नहीं है कि 1-2 गेम हुए, तो आई थिंक ऑन फॉर्म माउंट डजंट डिजर्व एज मच एज आई लव माउंट टू द कोर। आर्सेनल गोल बिल्कुल, और मैं काफी पीछे हूँ, और यहाँ पर और एक और, अरे मैं मिस कर दिया सुपर चैट भाई, अगेन मैं लेट हो गया, सॉरी, बट अगेन बिग अप है भाई डेरेन के लिए। वी माइट गो फॉर एडसन अल्वारेज एट विंटर फॉर 4-3-3। अगेन टूकल का वन ऑफ द मेन रीजंस ऑन द लास्ट डे ऑफ डेडलाइन, जो डेडलाइन डे था, टूकल खुश नहीं थे बिकॉज ही थॉट दैट बर्ली एंड को ज्यादा बेटर नेगोशिएट कर सकते थे विद आयाक्स फॉर एडसन अल्वारेज कमिंग इन सितंबर रादर देन जनवरी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड बर्ली एंड को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई टूकल उसी दिन फ्री हो जाए थोड़ा, ताकि वो हेल्प करे थोड़े नेगोशिएशन में, वो हेल्प करे थोड़े ट्रांसफर टॉक्स में, लेकिन वो नहीं हुआ, और इसीलिए थिंग्स ब्रोक डाउन फ्रॉम सितंबर 1 क्योंकि ओबामेयांग, रिमेंबर, उसके 2 दिन पहले ही दोनों ने डिस्कस किया था दैट व्हाट शुड बी द फाइनल ऑफर। So I don't think it happened like from 1 month as what people are saying, but it was slowly but steadily adding to it in terms of what he was saying to the media, in terms of the role of Tuchel, in terms of basically जो performances are in the pitch right from preseason. So it was a combination plus the fact that he was not available to talk at all times and do more than what was required just as a coach. तो वही था। अगेन डेरेन बिग अप है आपको फॉर द सुपर चैट अगेन, वुल्व्स विन। अरे भाई लुक एट दिस मैन अगेन, आप लोग बोलिए, चलो डिएगो कोस्टा आए वुल्व्स, आई नो दैट ही इज नॉट इन हिज प्राइम, ही इज नॉट अ डिएगो कोस्टा ऑफ ओल्ड, लेट्स बी ऑनेस्ट,
But Tuchel, what is the best destination for Tuchel in your opinion? I won't be surprised if he takes a break right now and he lands up at Real Madrid next season. I'm just early on saying it. क्या बोलते हो आप लोग? Let me know in the chat. Tuchel, भाई आज के दिन में भी he is a very good tactician. So where will Tuchel go? What is your as in guess? Germany, like and again Germany may from Chelsea. Why would he go to a Leipzig? Not that he loves Timo Werner anymore. Like I'm just saying again. So I feel sorry for Tuchel. Trust me, I do. Like again, and I'm trying to be as positive as possible because at the end of the day, भाई मैं समझता हूँ. Yes, I am one of you. So all the Premier League fans, especially, man, things move on. That's Premier League. That's life. That's unfortunately the truth. Zakaria can be the single pivot with Kante as a box-to-box destroyer. हाँ, वहीं पर मानो मैं थोड़ा सा as much as bro you know your stuff inside out, I absolutely adore you, लेकिन भाई थोड़ा सा मैं बोलता हूँ ना यहाँ पर 4-2-3-1, yes, by the way he has gone 4-2-3-1 भी, तो it could be a potential, it could be definitely a potential, लेकिन मुझे लगता है ना वहां पर do we have a core cam as well? That is my only question. Do you consider मानव हैवर्ट्स आज के दिन में कोर कैम होंगे, माउंट एक कोर कैम होंगे? आई डाउट इट again it'll turn into a 4-3-3 अगर आप देखो तो in that formation, where you're talking about basically Zakaria, Kante, Kova and Mount would be great. Again Mount wide नहीं खेल पाएंगे तो वहां पर with we have to take one hit, either एक extra DM we have to take a hit or एक extra player on the wide region, unless we kind of use Zakaria the way you're saying. Absolutely. Well, looking at current situation, what do you think will be position of Chelsea going into the World Cup? Chelsea plays 16 more matches before the World Cup, 11 Premier League, 5 UCL and 1 EFL. अच्छा, अगर हम top 6 में रहे ना, I'll be happy. I'll take it. Honestly, I'll take it. क्योंकि things can only go better come January ना. He will get a couple of players, potentially yes, couple of players जो बाहर निकलेंगे तब तक, और ड्रेसिंग रूम समझेगी उसको. Yes, it could go worse. अगर 6 के नीचे है then I can see a new manager coming. मैंने कल भी बोला था ये चीज. I think top 6 is what I would expect till December, simply put. और कप कॉम्पिटिशंस में I won't judge him really. हाँ, Tuchel just एक स्टार्ट देता भाई, and that's crazy. I was lucky enough to put that point even on Sony TV live just a couple of hours back. लेकिन I did mention भाई Tuchel हर एक competition में which he has participated in England, he has reached the final. I can't really believe, and not just that, एक मैंने बोला नहीं था, semi-finals, he has played 7 semi-finals across competitions. I know cup competition की बात कर रही है. 7 semi-finals, Tuchel's team has conceded just 1 goal. Is it for real? Think about it. मतलब that is something जो है ना चेल्सी में वापस से लाना है. इसीलिए मे बी पॉटर माइट एक्चुअली प्ले 3 द बैक. दैट्स माय ओनली कंसर्न वहां पर. आई एम होपिंग ही tries 4 at the back, but I think because of that reason he might go 3 at the back, considering वो जो stats रहे, he might want to attempt to get that back. Potter बस young player की डिमांड ना करे. You know what, we already have a lot of young players. Chukwuemeka, he'll get some minutes hopefully. We have Chalobah already, मैंने बोला है. We already, I think even मैं तो बोलता हूँ Pulisic और Mount, Havertz भी young players में गिनोगे यार, आप absolutely गिनोगे. तो he'll probably improve them is what I'm guessing, at least for the next few months. हैरी मैग्वायर किस टीम में है? अरे oddly 0-7 हैरी मैग्वायर is in Tottenham and he plays for England, of course, England captain. So basically Boehly wanted Tuchel to do what Javi did in the market and at the club to take more responsibility. Am I right? Well, Ali Gaming, मतलब you can read in between the lines कि भाई उनसे वो चाहिए था, लेकिन other way around आप देखिए ना, he wanted a clean slate क्योंकि यार things weren't good off the pitch, और he wanted a clean slate, a positivity to come. Yes, उल्टा negativity हो गया है for timing. There is against Boehly out बहुत, लेकिन I think eventually people will realize अगर वो results लाए तो it's all about results at the end of the day, और results जा नहीं रहे थे in terms of Tuchel. I am a bit worried about Edu Mendy. He isn't, Edu Mendy का तो मैंने directly बोला यार, मानव मैं तो केपा को देखता हूँ शुरू करते हुए. Not that he's ideal, मैं ये भी नहीं बोलूंगा. केपा gives me a lot of confidence, but he gives a little bit more confidence at the timing than Edu Mendy, as much as I like Mendy as well. Overall मतलब issues है लेकिन दोनों में. Chelsea have proper wingers except Sterling, and also can you rely on Oba to play the outright striker role? Again, it might be a 4-3-3 with Aubameyang playing the role, something like a Firmino. Why not? He might kind of run the channels. He might kind of step back, or he might just have the role of getting behind the defense, जैसे Welbeck का था. To Divyanshu, I think he has played 4-3-3 in within the game as well. Potter, जो मैंने दिखाया था ना 4-4-2. Like I said, he has gone 4-3-3. Aubameyang is someone who runs behind the defenders. आप बोलोगे as a Barca fan, pretty sure.
लेट्स गेट टू 200 लाइक्स ऐसा यार भाई 200 लाइक्स भी नहीं हुए अभी तक, ये क्या है भाई, मतलब आई नो आई एम नॉट आस्किंग फॉर इट बट आज तो बनता ही यार, कम ऑन। आज विराट भी सेंचुरी मारा है, आज मैं सोनी टीवी में भी आया हूँ, और आज बेसिकली टूकल, आई नो वेरी बैड न्यूज बट पॉटर आ गए, आई थिंक देयर इज 3 काइंड ऑफ ऑन द अपसाइड, तो भाई बिग अप टू Abhishek as well, absolutely भाई Abhishek, I know we were both chatting yesterday and I know that a lot of us are still not there yet, and I know that हम देख रहे हैं the worst happening with Potter considering his record, but again Abhishek, not just you but everyone in the house, I'm hoping कि यार we give him a chance, as much as I'm still not, एक होता है ना, मैं अभी तक वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई Tuchel is out of the club and the way he has gone out of the club, you know, all of a sudden the guy like him who literally said 2 दिन पहले भाई I wish I have 100 more and 100 more and 100 more, I don't know, but just saying it, and इतने जल्दी हो गया अपॉइंटमेंट, एंड दैट साउंड्स फिशी टू मी लिटिल बिट। लेकिन व्हाट अबाउट डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल मैन, डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल कौन आ रहा है? एंड बाय द वे यहाँ पर ये भी न्यूज आ रही है दैट ग्रैम पॉटर आई थिंक इज आस्किंग 3 पीपल टू जॉइन हिम। अगेन आई डोंट थिंक इट्स ऑफिशियल, इफ पीपल नो इट्स ऑफिशियल लेट मी नो। भाई तीन तीन नाम आए, मैंने बोला है स्कॉट मैकलेन इज गॉन आउट, इज द इंटरनेशनल स्काउटिंग चीफ ऑफ चेल्सी, वो तो निकल गए और वो खुद निकले बाय द वे। लेकिन व्हाट अबाउट दिस? I think Kyle McCauley, is the recruitment one of the recruitment consultants at Brighton. He's a senior recruitment consultant at Brighton. So Kyle McCauley also, if I'm not wrong, he comes with footballing experience. He's an ex-footballer as well. So यहाँ पर it might be a difference. Again, if it's not just Potter and team coming, so हमें देना पड़ेगा 2 विंडोज, यस हमें एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कम, पीपल आर सेइंग डाउनग्रेड, आई 100% अग्री, नो टू बेस अबाउट इट। लेकिन अगर टॉप 6 रखते हैं टिल द नेक्स्ट विंडो, देन व्हाई नॉट फाइट फॉर द टॉप 4 इन द एंड? इट्स नॉट चेल्सी स्टाइल, ये नहीं रहा है, लेकिन लेट्स होप दैट एक कप कंपटीशन में अच्छा कर दे, दैट्स व्हाट आई वुड से। ओके यस इट्स ऑफिशियल, सीसी ब्लूज बोले, ओके थैंक्स पीपल। ओके डायरेक्ट 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो ही एक इनएक्सपीरियंस कोच को, अगर किसी तरह से फेल हुआ फिर तो और प्रॉब्लम होगा सैक करने में। देव ज्योति वही है ना, मतलब हो सकता है देव प्रॉब्ली डन इट बिकॉज ऑफ खुद नाइविटी जो किए थे ना टूकल, मे बी सबकॉन्शियसली दे आर थिंकिंग भाई वापस से ये रिपीट नहीं करना अपने को बेसिकली थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इट्स अ न्यू क्लीन स्लेट, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो प्रॉब्ली वो लोग तैयार है फॉर गिविंग एटलीस्ट अ कपल ऑफ इयर्स, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम बचा रहेगा कॉन्ट्रैक्ट में उतना ज्यादा सेवरेंस पैकेज देना पड़ेगा, राइट? तो आई एम प्रीटी श्योर they have done it on purpose, thinking that okay fine, I'm hoping that we are going to give him a run, and probably that's maybe in a way players also will know that this for the long term, तो हम खेल नहीं सकते ज्यादा, maybe I'm just guessing that। okay, one goalkeeper coach also is coming, interesting that। बिल्कुल यार आदित्य, एंड आई नो अभिषेक आप भी यार सेम चीज हो, मैं खुद बोल रहा हूँ ना, मतलब अगेन सोनी टीम में जब डिस्कस कर रहा था पैनल बोल रहे थे आई वी कुड सी इट कमिंग, लेकिन यार मैं तो बोल रहा भाई अभी तक मैं शॉक्ड हूँ सच में, एंड दैट्स अ फैक्ट। चलो यहाँ पर आई थिंक डेरिन हैज शेयर्ड समथिंग, लेट मी जस्ट सी व्हाट ही हैज शेयर्ड डेरिन। अगेन पीपल जो भी है डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लेट्स गेट टू 250 लाइक्स क्विकली। ओके वही है, मतलब तो ग्रैम पॉटर्स असिस्टेंट बिली रीड, फर्स्ट टीम कोचेस यॉन Hamburg and Bruno, goalkeeping coach Ben Roberts and assistant coach of recruitment Kyle McCauley will join Chelsea। अरे भाई मतलब काफी लोग हैं, it's just not 3, I think it's about 5 people who are joining, so hopefully they bring in more than just basically this जो हम expect कर रहे हैं in terms of tactics, it is more off field as well in terms of scouting, in terms of वो सब what Boehly and co are expecting वो भी करें। अगेन मैं थोड़ा सा स्किप करो भाई कमेंट्स, अगेन काफी कमेंट्स है, आई ट्राई एंड टेक एज मच कमेंट, लेकिन आप देख सकते हो नीचे, यू कैन ऑलवेज सुपर चैट अगर आपको लग रहा है वी शुड प्रायोरिटाइज। काइल मैकॉले इज द वन लीडिंग द रेस राइट नाउ, आई थिंक पॉटर विल बी गिवन एटलीस्ट 2 years if he has a set of personal arriving, yeah probably yes। अरे रायन कैसे हो, ऋषि एज वेल। यूनाइटेड सोसिएडाड, यार मैंने तो बोला है कि यूनाइटेड जीतने वाली है, कंसीडरिंग द फॉर्म, एक कॉन्फिडेंस, प्लस रियल सोसिएडाड हैज वीकेंड, that is the only reason that finally एक स्पेन का कर्स ऑफ हो जाएगा। yes every day is not a Sunday, but I think मेरे ख्याल से यूरोप में भाई टेन हाग को मैं बैक करूंगा। yes रोनाल्डो देयर नॉट आइडियल, लेकिन भाई मैं फिर भी बोलूंगा यूनाइटेड 2 रियल सोसिएडाड 1 में बोल रहा हूँ। आप लोग बोलिए क्या बोल रहे हो आप। सैकिंग सूट्स चेल्सी वाइबव, अगेन मुझे याद है आप कल भी बोल रहे थे, एग्जैक्टली सेम कमेंट किया था आपने, बिग अप आपको भाई, लेकिन वही है ना, अप टू व्हाट पॉइंट? इफ देखिए डिफरेंस है, आई गिव यू एग्जांपल्स, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ पॉइंट। जब हमने जोजे मोरिन्यो को फर्स्ट टाइम सैक किया था, ठीक है, वी गॉट इन एवराम ग्रांट इफ आई रिमेंबर राइट सबसे पहली बार,
and then at that point we had a Michael Ballack, we had a Shevchenko, we had a Didier Drogba, we had a Terry, we had an Ashley Cole, we had and what crazy Michael Essien. भाई इतने सारे Petr Cech, इतने सारे 7 नेशनल टीम कैप्टन्स. आई नो एशली कोल को नहीं जोड़ते, 6 नेशनल टीम कैप्टन्स थे उस समय. इमेजिन करिए आप. अगेन लेटर ऑन आप बोलोगे व्हाट अबाउट लैम्पार्ड के दौरान भाई वो एक अलग माहौल था, बिकॉज वी वर इन अ ट्रांसफर बैन. सो यू वर प्रोबेबली गेटिंग मोर फ्रॉम द प्लेयर्स देन यूजुअल, क्योंकि दे न्यू दैट देयर इज अ ट्रांसफर बैन. एंड प्लस लैम्पार्ड वाज बैकिंग ऑल द यंगस्टर्स. ठीक है, तो इनिशियली आपको इसलिए एक होता ना, एक फर्स्ट सीजन में आपको मिला देखने को. एंड जोसे मोरिनो पार्ट 2 जब आए थे, दैट इज द टाइम व्हेन प्रोबेबली ही केम, बिकॉज आपको याद है तो ही गॉट बैक डीडियर ड्रॉग्बा. Not at his peak Didier Drogba. For what? For leadership. Even under I would go as long as to say even under Conte and Sarri, हमारे पास थे Terry and Cahill जो were there in the last years of the Chelsea career, but they were still leaders at some point. So that leadership, who have been in Chelsea for a long time, it's there only in maybe Aspilicueta and N'Golo Kante. आज के दिन में अब देखिए N'Golo Kante भी natural leader है, arguably not. So that is the main problem. इसीलिए I would say that just sacking, especially when there is no एक backbone in basically off field activities, वो एक issue है. लेकिन again time will tell. Looks like they are going to give him time. अब हमें करना है good football. भाई एक positivity लाएगा. Let's be honest. Good football will bring about some positivity. People remember Lampard का पहला सीजन में मेरे खुद के predictions क्या थे मैं बोलूं? Chelsea will finish 8th or 9th. Yes, मेरे खुद के predictions थे ये. क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता था अच्छा फुटबॉल, लेकिन टू मेनी यंगस्टर्स, वी डोंट हैव अ ट्रांसफर विंडो टू बी रिलाइंग ऑन. तो यहीं पर सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो ये है. तो अगर अच्छा फुटबॉल देखने को मिले तो आई थिंक प्लेयर्स विल हैव मोर कॉन्फिडेंस, द क्राउड विल हैव मोर कॉन्फिडेंस, एंड इट कैन गो फ्रॉम गुड टू बेटर टू बेस्ट. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले एक्सपेक्टेशन रखिए अंटिल नवंबर एंड, अंटिल द वर्ल्ड कप स्टार्ट्स. भाई अगर टॉप 6 में रहे, आई थिंक दैट्स गुड इनफ फॉर मी. ओके, Graham Potter is attractive football playing manager, but the players we have a more defensive minded attacking. Again, Andy, you have a point certainly under Tuchel the way he played, but remember Kai Havertz in Bayer Leverkusen. आप अगर देखे हो, मैं लास्ट सीजन Kai Havertz का काफी क्लोजली देखा था. अगेन बिकॉज इफ यू रिमेंबर वो लॉकडाउन के समय था. लॉकडाउन के समय बुंडेसलीगा स्टार्टेड वे बिफोर, राइट, देन अदर लीग्स. और वहां पर मैंने Kai Havertz को बहुत क्लोजली देखा था बिकॉज वी वर वेरी स्ट्रांगली लिंक्ड फॉर अ गुड पीरियड. तो Kai Havertz is one probably who can be used more in a sense to skill based है ना play. Kai Havertz can be used. Pulisic is more direct. Yes, you can say that वो pace पर rely करता है, but again Trossard not too different अगर आप देखा जाए तो. तो I think वहां पर you can utilize skills as well जो हमारे पास है. Sterling also is very skillful. I don't think it's a problem of defensive mindset. It's about the problem of the way that he's voicing on the team कि भाई आपका क्या रोल है टीम में. मुझे लगता है अब्रामोविच का पैसा लगा हुआ है, काम तो सेम हो रहा है. इट इज अर्ली टू सैक टीटी. वेल, उसकी आत्मा तो मंडरा रही है चेल्सी में. आप क्या बोलोगे? as much as he's alive, as much as big up to Abramovich be, I'm seeing Gallagher being established as a regular. He's a great going forward, takes long range shots, good presser and can drive the ball. Tough times for Jorginho ahead. Manav, only thing is I hope Gallagher uses number 8 in a 4-3-3. अगर वो चाहते हैं 4-4-2, Gallagher doesn't fit in, Mount doesn't fit in. That's the problem. If he goes basically a 3-4-1-2, I don't see Gallagher starting in that one position behind the two strikers. ठीक है? Or if he goes for a 3-4-3, वहां पर I don't want Gallagher to be used as a wide man. सच में बोलता हूँ मैं. I really want wide man अगर use कर रहे हैं भाई, use natural wide people. Maybe even Havertz I'm okay, but not a Gallagher or a Mount. सच में बोलता हूँ. Yeah, 4-3-1-2 again. वो ये 4-3-3 आप बोल सकते हो. 4-3-3 हमने डिस्कस किया है, but do we have the personnel? I don't know about that. ओके, आ गए haters. Thank you, welcome to the stream. Thanks for subscribing by the way. Thanks a lot, means a lot. अगर आप जलते हो पता नहीं किससे, keep being jealous bro. कोई नहीं. Will Graham pay 3-3-3-1 against Fulham like he played against Man United? 3 the back तो शुरुआत लग रही मुझे हैदर, क्योंकि कंसिडरिंग हम लीक कर रहे गोल्स, दैट इज द ओनली रीजन. लेकिन अगेन इवेंचुअली he'll change. मैं देखता हूँ ना that he is probably going to be using एक होता है ना डबल पिवट फॉर दैट रीजन, क्योंकि हम लीक कर रहे गोल्स. मे बी वो एक फर्स्ट चीज है, बिल्ड फ्रॉम द बैक जो टूकल किए था आके. तो इट्स नॉट वेरी इंडिफरेंट. व्हाट डू यू थिंक, हाउ विल पॉटर परफॉर्मेंस इन यूसीएल एज ही डजंट हैव एनी एक्सपीरियंस? हां अनिकेत, दैट इज द बोनस. तो पीपल हु आर एक्सपेक्टिंग पॉटर टू डू वेल इन यूसीएल, भाई भूल जाओ.
सच में. And you can clip me. Yes, you can clip me. मतलब it's not a coincidence. Tuchel was in the final of the Champions League before he won Chelsea the Champions League. People forget that. ठीक है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस वहां पर. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, टू सम एक्सटेंट एक्सपीरियंस मैटर्स. इट डेफिनेटली डज, स्पेशली वो चैंपियंस लीग में क्रूशियल नॉकआउट फिक्सचर्स जहां होते हैं, वहां पर यू नीड टू हैव दैट, यू नो, दैट ईगो एज वेल टू एन एक्सटेंट. एक होता है ना एक ऑरा. डज ही हैव? टाइम विल टेल. हो सकता है जनवरी तक अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं, which hopefully we should. Come on, we are still favorites despite the loss. मैं बोलता हूँ on paper. तो भाई he can get the players confidence and get, you know, just more voicing. और वो is he known for that? Not really. That's the मैं चाहता हूँ he builds that, he learns that. Yes, he can learn on the job. He's still 47 by the way, Aniket. पॉटर ने कभी 4-3-3 यूज किया है क्या? हाँ, इन गेम किया है, जैसे मैंने दिखाया था. आई थिंक अंकुर आप लेट ज्वाइन किए. 4-4-2 is what he started, but then he plays 4-3-3 in game. Absolutely he does, because of वहां पर उनके पास था एक डिफेंसिव मिडफील्डर. David talks football in the house. How are you, bro? Potter should be given at least 2 years. Then after results, then we can talk. Yes, David. But what are you expecting from this season? Let me know. अगर हम top 7 में नहीं आते ना, no Europe at all. Trust me, he's gone. Trust me, he's gone. 100%. Uh, okay. Hi, Just Voila. How are you? Much love to all Chelsea fans as well. I hope you can get Castillo in the winter transfer window or a DM. Yes, we were linked. Manchester United, Chelsea दोनों ही linked हुए थे. But देखते हैं भाई, मतलब अगर एसन अल्वारेज के साथ ऑलरेडी बात हो चुकी है ना विद अयाक्स, आई फील एसन अल्वारेज एज मच एज कैसिडो इज मोर प्रीमियर लीग प्रूवन एज ऑफ नाउ एंड प्रोबेबली लुक्स अ बेटर फिट. मुझे लगता है एडसन अल्वारेज प्रोबेबली कैन बी द गाय जहां पर वो मल्टीपल फॉर्मेशंस खेल सकते हैं. तो आई थिंक एडसन अल्वारेज का अगर एडवांस टॉक्स हो गए तो डोंट वेस्ट टाइम. इस बार जो जूल्स कुंडे के साथ किया था ना हमने, यार सबसे पहले चल जाओ और उनको जनवरी में लाओ. सिंपल एज दैट, मैं तो बोलता हूँ. और ला सकते हैं भाई, ब्राइटन से और प्लेयर्स ला सकते हैं भाई. मे बी अ ट्रोसार्ड, हु नोस. ट्रोसार्ड इज समवन who can kind of play multiple positions, has that pressing, has that, you know, skill as well. भाई वो wing back भी खेल सकते हैं, वो basically cam भी खेले हैं. तो Trossard is one of them in my opinion. Come on guys, let's like the stream भाई, like कर दीजिए. And yes, definitely for people joining late, I had the opportunity and the honor to be on Sony TV earlier today, and yes, absolutely brilliant moment. A second time to be meeting you know, John Dykes live, as well as, you know, David James, and of course Don Hutchinson first time. मैंने link डाला है description में, as well as in the community post I have shared, so please check it out. And of course we had reacted live when the announcement हुई about Potter. Will Todd back Potter and get his players in the next transfer windows? आई थिंक थोड़ा सा हेजिटेंसी होगी इन टर्म्स ऑफ बेसिकली, एक होता है ना ओपन द बैंक वाला सिस्टम नहीं होने वाला है. बिकॉज आई एम नॉट सीइंग चेल्सी टू बी इन द टॉप 4 कम दिसंबर. अगेन आई एम होपिंग आई एम रॉन्ग. आई एम होपिंग आई एम रॉन्ग. अगर होते हैं देन ही माइट, लेकिन इन द टॉप 6 अगर रहे देन अगेन स्पेंडिंग अनदर 200 मिलियन नहीं होने वाला है. जनवरी में ऐसे भी अच्छे प्लेयर्स मिलते नहीं है. तो समर विंडो में हो सकता है अगर ही स्टेज टिल समर, बट नॉट इन जनवरी. जनवरी में मैक्सिमम कपल ऑफ प्लेयर्स इज व्हाट आई सी, स्पेशली कंसिडरिंग कि हमारे पास भी बड़ी स्क्वाड है यार. यार वही है वाइबा मैंने दिखाया था, राइट. मैंने दिखाया था सबको, आप शायद लेट ज्वाइन किए हो. इस ट्रांसफर विंडो में इन्वेस्ट ना करके अगर एक डायरेक्टर फुटबॉल ला के फिर इन्वेस्टमेंट करता तो ये झोल नहीं होता. बहुत ही बढ़िया पॉइंट है यार, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है. लेकिन वही ना देवी होती है, आप देखो बॉटम लाइन यही मुझे नजर आ रहा है, दैट इट इज मोर अबाउट देम नॉट. होता ना एक एक केमिस्ट्री नहीं बनी यार. अरे अजीब सा बंदा है यार ये, हम बोलते कुछ है समझता कुछ और है. ये हम जब फोन करते गायब रहता है, ये अपने एजेंट को भेजता है, यू नो दोस काइंड ऑफ थिंग्स. ये यू नो अपना अपना मुंह खोलता है मीडिया में. अगेन आई डोंट थिंक लाइक दैट. आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग, मे बी एज पर रिपोर्ट्स दोज आर द थिंग्स दैट दे आर ट्राइंग टू से, ऑल द रिपोर्ट्स, कि भाई इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ, यू नो, एक होता है ना एक कंपैटिबिलिटी और एट वर्क नहीं बनी, सिंपल एज दैट. इसीलिए बट स्टिल इन इन जो भी रीजन हो यार, चलो लेट्स अज्यूम लड़ाई होगी, नहीं हुई थी एज पर रिपोर्ट, लेकिन लेट्स अज्यूम प्रॉपर लड़ाई होगी थी. फिर भी फिर भी थॉमस टूकल ने जो किया है चेल्सी फुटबॉल क्लब के लिए भाई, पहले आई टेल यू सम स्टैट्स. बाय द वे, यहाँ एक पेनल्टी मिला है भाई, पेनल्टी मिला है ज़ुरिक को. एक मिस्टेक है आर्सेनल के डिफेंडर द्वारा और एक पेनल्टी मिला है ज़ुरिक को. लग रहा है ज़ुरिक माइट इक्वल. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आप लोग बोलिए चैट पे क्या होने वाला है. भाई थॉमस टूकल, he was the first Chelsea manager to remain unbeaten in the first 13 games. He has the longest away unbeaten run, 10 games as a Chelsea manager. Longest winning streak, 8 games away. In EPL, fewest goals conceded in English top flight after 50 games, 24 goals only. First manager in EPL history to keep 5 clean sheets in 5 consecutive home games, first 5 games at home.
और यूसीएल की बात कर लो तो चलो लेट्स नॉट इवन टेक चेल्सी. थॉमस टुकल एज अ मैनेजर, अगेन आई एम सेइंग दैट इट इज अ मिस्टेक इन हाइंडसाइट, एब्सोल्युटली यस, अनलेस यू नो जो पॉटर ने को मौका नहीं मिला, फाइनली ही गॉट द चांस एंड ही प्रूव्स मी रॉन्ग होपफुली. चैंपियंस लीग में फर्स्ट 50 गेम्स में मोस्ट विंस, I'm assuming that includes PSG and Chelsea as well as Dortmund, right? लेकिन 32 है, 32 wins in first 50 games. Wow. UCL history में first 5 consecutive wins without conceding a goal. Chelsea became the first team in UCL history. तो इतने सारे चीज जो ला रहे हैं ना, मतलब it's not a coincidence. You have to say. By the way, penalty में बहुत टाइम लग रहा है यहाँ पर. थोड़ा गेम्स फिनिश चलते हुए, लेकिन स्कोर कर दिया भाई ज़ूरिक ने. भाई आर्सेनल 1 ज़ूरिक 1. इट्स एन अवे गेम, रिमेंबर. मैंने तो बोला भाई whatever away game in Europe, it was never easy, and especially with the crowd back since last year, it is not so easy. Trust me on that. I won't be surprised if we get Gilmore back from Brighton. me too भाई, क्योंकि हमारे पास एक बैकअप core DM चाहिए who also knows how to play with the ball, and resist press as well. So you can argue that absolutely, लेकिन again it won't be right, to be honest. I really hope the Inter appoints Tuchel. Oh my God, शांत भाई बिग अप आपको, लेकिन वही है इंटर इंजागी यार. आई नो दैट लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स, इंजागी एलेग्री दोनों ही क्लब्स में थोड़ा क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, बट अगेन आई डाउट कि वो सेरिया जाएंगे. नथिंग अगेंस्ट सेरिया, आई लव सेरिया, आप तो जानते हो, सब लोग जो देखते हैं भाई. मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं यहाँ पे एक काका वन काका का है जर्सी. लेकिन देखिए, I believe so for him, maybe Spanish league or German league or English league is what is suited more, in my opinion. Again, I might be wrong. Okay. Are we moving to 4-4-2? Well, that could be a possibility. 4-4-2 in possession, 4-3-3 while defense, quite possible. Shank, जैसे मैंने दिखाया था. Havertz at wings, please no. नहीं wings नहीं, मतलब अगर Havertz खेलेंगे ना तो it'll be more like the 3-4-1-2 formation. अभिषेक मैं तो बोलता हूँ. हाँ, मेरा पॉइंट यही था कि अगर बाई चांस आपको खिलाना ही है ना 4-3-3 में समवन वाइड, तो एक्चुअली कंपेयर्ड टू से Mount or a Gallagher, I would prefer Havertz in position. इतना बोल रहा था बस मैं. Don't get me wrong. It's not my preference either. What do you think? How will Potter perform in UCL? मैंने बता दिया उसका आंसर. Do you think Potter going for ice in Jan or next summer? Well, that would be ideal. Ideal मैं तो बोलता हूँ. मैं तो बोल ही रहा भाई. Actually, Germany होते ideal. लेकिन अभी Rice would be ideal. Absolutely. Pulisic and Ziyech definitely not even championship level. Better players in second division in terms of output. How can we trust them? यार अजिंक्य, ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा. आई हैव टू एडमिट, आई हैव टू पुट माय हैंड अप. जब रूडिगर खेलते थे अंडर लैम्पार्ड, मैं गाली देता था रूडिगर को. आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट हियर, एंड ट्रस्ट मी, ऑल चेल्सी फैंस, प्लीज टेल मी, हाउ डिड रूडिगर परफॉर्म अंडर लैम्पार्ड टुवर्ड्स एंड? यस, काफी चांसेस नहीं मिले थे, बट जब मिले थे टुवर्ड्स द एब्सोल्यूट एंड मिले थे, और उसके वजह से ऑलमोस्ट वी कंसीडर्ड गोल्स. देयर वर मोमेंट्स, इवन टोमोरी टू सम एक्सटेंट, people say that we made a mistake. भाई आप अगर जाकर केयरफुली देखे, टोमोरी हैड अ गेम अगेंस्ट टॉटनहम या वेस्ट हैम, आई रिमेंबर, इट वाज द लंदन टीम. वहां पर क्या मिस्टेक किया था भाई, मतलब दे वर स्विच्ड ऑफ. तो जिएश का वही है, आपका यू आर नॉट प्लेइंग फॉर द मैनेजर. पुलिसिक द सेम. तो आई वुड स्टिल गिव देम 1-2 और महीने, 5 or 6 more chances at least, and then probably come to conclusion, because yes, it's not the right attitude. I 100% understand Ajinkya. By the way, half time हो गया, 1-1 है आर्सेनल का अवे. लेकिन भाई इट्स ओनली फेयर भाई. एट द एंड ऑफ द जीएश, ओके, टू सम एक्सटेंट आप फिर भी आर्ग्यू कर सकते हो, बट ही इज लेफ्ट फुटर, ब्रिंग्स डिफरेंट स्टफ. रिमेंबर भाई, ही हैड मार्च इन ब्राइटन. व्हाई कांट जीएश बी योर मार्च? आई एम जस्ट सेइंग, फॉर ऑल यू नो, जीएश यस प्रीमियर लीग में काफी हकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव एबिलिटी, ही गिव्स द बॉल अवे एंड ऑल दैट. भाई जीएश हैज सम स्ट्रेंथ ऑन हिम, ही कैन यूज इफ एक होता है ना मैनेजर का बैकिंग मिले तो यू नेवर नो. Ziyech can do a march, जो करते थे in Brighton. Europa League coming, well, November तक, then take game by game CFC Blues. That's what I'm saying. I'm hoping still Champions League मिले, लेकिन again भाई Potter खुद ही Champions League के लिए नए हैं, तो I'm not going to be very very confident. Yeah, very honestly, just my opinion. आप भी कर सकते हो in terms of your prediction. No, not Europa, but we may be out in knockouts. Wow. Victor Osimhen to CFC. Well, again, too early in my opinion to think about it. I hope right away नहीं हो रहा है. I know that things are picking up, लेकिन Osimhen कल का मैच भी देखिए वापस से इंजर्ड हो गए थे, तो I think we'll wait. Considering the Aubameyang we've just signed, I know it's not a Potter player, but who knows, who's going to come. Let's see. We'll give it time. Again, Darren पूछ रहे थे about Lukaku. I really doubt, अगर वो अच्छा करते सेरिया में, I rather sell him.
Do you think Potter going for Rice in January? ले लिया था question में. Again, please don't spam people. Much love to everyone. Ankit bhai, I think it's 4-2-3-1. Kepa, Kuku, Fofa. मैं फोफू बुलाता हूँ भाई, फोफू फोफाना को. बाहुबली, रीस, कोवा, कांटे, स्टर्लिंग, हावर्ड, जियेश, ओबा. that looks kind of more realistic. देन लग तो रहा है, लेकिन मेरे लिए वही है यार. मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप देखिए, मतलब 4-2-3-1 आप बोल रहे हो, लेकिन डज हैवर्ट्स हैव इनफ इन दैट कैम रोल टू डू डिफेंसिव एबिलिटी वर्टिकली? चैनल्स इज नॉट बैड, वर्टिकली डज ही हैव इट? ये मेरा बिग क्वेश्चन है. अगर मैं 4-2-3-1 खिलाऊंगा ना, तो आई वुड रादर हैव माउंट इन दैट कैम पोजीशन. ही इज मोर ऑफ एन ऑस्कर देन हैवर्ट्स. I'm just, आप रिलेट कर सकते हो होपफुली फॉर पीपल हु वॉच्ड ऑस्कर एंड मोरिनियो टुगेदर. डैनी वेलबैक टू चेल्सी 100 million डन. नहीं नहीं, वो तो इंजरी प्रोन है काफी, तो वो तो मैं नहीं बोलूंगा. एंडी, आई नो योर फन. I watched the show today. Great. Thanks, Just Vaila. Again, thanks to everyone out there who supported me. Chelsea की ट्रांसफर मार्केट पूरे सीजन चलती है, कभी फुटबॉलर्स, कभी मैनेजर्स, कभी ओनर्स. सम स्टेबिलिटी हैज टू कम समवेयर, इसलिए एक्सपेक्ट कम करो अभी के लिए. भैया, एनी चांस ऑफ चेल्सी वर्सेस बारसा दिस सीजन? यार अभी एज थिंग्स आर गोइंग, आई वाज होपिंग, जब टूकल थे, मैं खुद बोला था बहुत बार, आई होप हम मिले भाई नॉकआउट्स में. अभी यार, विल वी इवन रीच दैट स्टेज? लेट्स सी, टाइम विल टेल. अभी भी मैं देना चाहूंगा, गिव हिम द बेनिफिट डाउट, दैट इज पॉटर, ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम. ओके, एग्जैक्टली, अनहाइडिंग हिम विल मेक हिम कम इन स्पैम. यस, बिल्कुल यार. सीएफसी ब्लूज अगर आप कर रहे हो तो भाई मत करिए, और अगर आप ही, तो आप भी मत करिए यार. सिंपल एज दैट. let's just spread love यार. No point spreading hate anywhere, be it in any field, in any channel, anything what you do in life यार. What is the point of spreading hate? I don't agree, I don't understand. मतलब आप देखिए, मतलब आदमी, मैं थोड़ा फिलोसफिकल हो रहा हूँ. यार आदमी प्यार का भूखा है सच में. एवरीवन, आदमी औरत, आई मीन एवरीवन, डोंट मार्क माय वर्ड्स, लेकिन भाई एवरीवन, दैट इज अ फैक्ट. तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्प्रेडिंग हेट? एनीवन फॉर दैट मैटर. बट कोई नहीं. I hope at least Potter plays contained DCM role where he would be ideal defensively, and we play one central midfielder and one cam in 4-3-3 formation. I want to see that once at least. Long time wish. Wow, that's for Samir kind of. मतलब on theory in FIFA, I myself have played that, but वही है, मतलब भाई कांटे इन दैट रोल. मैं एग्जांपल देता हूँ भाई. कांटे, आपको याद हो, मतलब ही डिफेंस कॉर्नर्स, ही इज द लास्ट मैन. तो आपको पता है भाई, 2-3 बार हुआ है कांटे हैज बीन बीटन, क्योंकि एट ही हैज दैट वन मोमेंट वेयर ही लूजेस द बॉल एंड देन ही काइंड ऑफ पैनिक्स. तो है कांटे में, एज मच एज कांटे इज वाओ, ही वैसा प्लेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन ही डजंट हैव द पास ऑन हिम दैट वी नीड. दैट एक होता है ना, एक मेच्योरिटी टू पास इन दैट पोजीशन, वो भी नहीं है. दैट इज द ओनली रीजन मैं वहां पर अग्री नहीं करूंगा. मुझे बिग अप ब्रो, कैसे हो? नाइस टू ऑलवेज सी यू, एंड ऑफ कोर्स डू लाइक एंड सब्सक्राइब यार. एब्सोल्युटली एवरीवन, प्लीज डू दैट. बिल्कुल बिल्कुल. जीशान भाई भी, कैसे हो भाई? नाइस टू सी यू ऑलवेज. प्लेयर मैनेजर ब्राइटन भाई, इज इट परमानेंट? आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी परमानेंट, मानव. आई रियली थिंक सो. आई नो ब्राइटन है, कुछ भी कर सकते हैं भाई, लेकिन अगेन एब्सोल्युटली नो एक्सपीरियंस. आई डोंट थिंक सो मैन. मानव, आप बोलिए. आई डोंट थिंक सो. ब्राइटन फैंस हैं यहाँ, बट जनरली द वे दे हैव स्टार्टेड द प्रीमियर लीग, आई थिंक दे डिजर्व अ बेटर मैनेजर. नथिंग अगेंस्ट एडम ललाना. या बिल्कुल यार. स्पैम टूकलोपी यार, ये तो मैं अग्री करता हूँ भाई. टूकलोपी हो जाए चैट में, मतलब आई नो दैट बर्ली, या वी हैव टू बैक आवर ओनर्स एंड व्हाट नॉट. बर्ली एंड को, इकबाली भाई, जो भी है, they did not see the emotional quotient जो मैंने आज बोला था when we discussed with John Dykes, James and Don Hutchinson. हमने वही डिस्कस किया था कि ये इमोशनल क्वेश्चन देखे ही नहीं. they acted like pure businessmen and things didn't work out in terms of compatibility. But they forgot there was a relationship between Tuchel and the club. There was a relationship between Tuchel and the fans. He didn't get that send off. Let's at least give us a send off on Almighty Blues FC to Tuchel. Absolutely. या बिल्कुल. आर्सेनल कंसीड बाय, काफी सारा मैसेजेस में स्किप किया हूँ, बट एनीवे, पीपल बिग अप. Don't know what is Chelsea are doing, spending 100 million in Lukaku and letting him leave to Inter. Don't have sporting director. Exactly. और देखिए Andy, the point is Lukaku going or rather being sold. Yes, you can say it is in Chelsea's favor क्योंकि भाई he was problem off the pitch even more recently, and his agent as well. लेकिन again, टूकल का अश्योरेंस मिला था वहां, टूकल का हामी मिला था, राइट? So that is even more strange. Absolutely, I agree with you. It's not any planning. We are just not coming with any planning. Hopefully, this is an appointment along with director of football, जो as per news आ रहे हैं. It is going to be a long term. Let's go with that and be patient is what I would say. But whether there will be, time will tell.
Not worried about Premier League games, but UCL में Potter क्या उखाड़ेगा? Really doubt. Yeah, I agree with you, Prashant, 100%. Ziyech is finished player again. Maybe मैं थोड़ा biased हूँ with a player like Ziyech. मैंने काफी दफा बोला है स्ट्रीम में. देखिए यार, मतलब एक रिसेंट मैच था, आई डोंट रिमेंबर विच, मैंने शायद वॉचलॉन्ग या रिव्यू या प्रीव्यू किया भी था उसमें नेक्स्ट मैच का. तो मैंने बोला था एक मैच था रिसेंटली, इट वाज प्रोबेबली, आई थिंक, ही केम ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट. was it the loss to Leeds itself? Because there was a point जहां पर हमें लग रहा था भाई we need a passer. और if you see सेस फैब्रिगास ने बोला है, देखिए यार, in a team like Chelsea जहां पर opposition play low block, we need that passer who makes that crazy pass, who no one can read but your forwards can read. Problem ये हो रही है with Ziyech, his own forwards are not reading. तो ये he's going extreme, he's going hyper, he's going anxious हो रहे. तो दैट इज द प्रॉब्लम विद Ziyech, राइट? तो इसीलिए अच्छा नहीं कर पा रहे इन माय ओपिनियन. अरे नो प्रॉब्लम यार डेरिन, कोई नहीं, टेंशन नहीं है. मतलब सब प्रकार के लोग होते हैं यार दुनिया में. I think the new dawn for Chelsea, bro. And to be honest, I do feel that if Graham Potter can get the team on side, you will be a very good team and could have a say in the league race. You know what? I mean, bro, big up, by the way. People, by chance, by now, you have not realized. In every description, I put in a couple of channels apart from हमारे दोनों channels. और yes, हमारे भी दो channels है यार, Almighty Sports Plus और Almighty Blues FC. तो Almighty Sports Plus पर भी जाकर प्लीज सब्सक्राइब करिए और hit that bell notification icon. But there are two more channels I would like to give a shout out. That reminds me. Football versus Cancer. Now, Football versus Cancer is Talk and News initiative. This is basically a fellow fan who knows his stuff inside out. I trust me on that. वो panel में भी आ चुके हैं. And he has started a channel for the fight against cancer via football. And that is his objective. So let's support that cause. So it is in the description below. Football versus Cancer. आपको just क्लिक करना है. Same thing Almighty Sports Plus. Same thing Almighty Blues FC. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, so let's subscribe, hit that bell notification icon on Tino channel. I'm giving you like a few seconds. Please do that. And one more channel, Chelsea Perspective. Again, that's a brother, so I'm giving him a shout out as well. Every description has these four channels in below. Okay. Oh man, Queen Elizabeth is no more. Yeah, oh, bad news. Yeah, bad news. Rest in peace. Absolutely, it's true. I hope this time is true, right? Again, I don't hope, but you know what I mean, right? I hope it's not a rumor. Remember Rudiger games against West Ham and Sheffield United? Sheffield United. भाई क्या याद दिला दिया मैन. अगेन, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने दिया था गाली यार, सच में मैं बोल रहा हूँ. Hope we get a Kohinoor. Come on, man, Rushi. Brighton. Okay. Do you think the players got pissed with the dual or triple roles had to play on the TT, especially the attackers? I would specifically point out, मैंने live भी बोला था on Sony TV, that Pulisic is one who is definitely that. Ziyech. ये दोनों in particular will be that. Ruben Loftus-Cheek not as much. लेकिन पुलिसिक और Ziyech मेरे लिए मेन इस स्पोर्ट में, जो अजिंक्य बोल रहे हैं ना. अरे कोई नहीं CFC ब्लूज, आई नो दैट यू सपोर्ट द चैनल इज लॉट, मच लव ब्रो. ब्राइटन का मैनेजर कौन होगा अब? टीटी? नहीं यार, टीटी तो नहीं यार. टीटी, नो disrespect to Brighton, भाई. टीटी deserves, he was a world's best manager just 10 months ago. UEFA manager of the year 12 months ago. Come on. As much as Brighton is respected, definitely not. Bilkul, thanks Hasib, thanks a lot. And again, it's the passion and it's your support. It's you guys. It's again Almighty family. मैं तो बुलाता हूँ भाई. You all are my friends. Ankit bhaiya, your take on no attackers thriving under Tuchel. Like, do you remember us being consistent after the Chilwell injury versus UA? You know what? Dipanjan has a very good point. At some point, people have forgotten. Short-term memory loss होती है भाई फुटबॉल में. क्या हुआ था यूवेंटस गेम के दौरान? चिलवेल इंजरी हो गया था 2 गेम बाद में. आयरॉनिकली इट वाज रीस जेम्स अगेंस्ट ब्राइटन जो इंजर्ड हुए थे, प्लेइंग लेफ्ट विंग बैक. आई नो वो गलती थी टूकल की, लेकिन दैट इज व्हाट हैपेंड लैम्टी के द्वारा. आई नो इट वाज नॉट लैम्टीज मिस्टेक, बट देन वी वेंट डाउन साइड. एंड इसीलिए, एंड अगेन, मैं खुद ब्लेम किया टूकल को फॉर प्लेइंग पुलिसिक एट विंग बैक. हमें जरूरत थी भाई कैलम हसन-ओडोय पुलिसिक को विंग बैक खिलाने की. हमें जरूरत थी. एट वन पॉइंट, व्हाई डिड लॉफ्टस-चीक प्ले सेंटर हाफ? आई थिंक इट वाज अगेंस्ट लूटन टाउन जस्ट आफ्टर रोमन वेंट अवे. That same evening, in fact, we didn't have center half, did we? इसीलिए वो खेले थे. And हमारे एक comfort factor बन के था playing 3 at the back. So at some point you can also say that on context और जो है ना circumstance, वो उसके लिए किया टुकल ने. क्या मिस्टेक किया? He did not give attackers back that freedom which they deserved. हाँ, we were not doing well defensively starting say maybe March, April, लेकिन he should have probably gone that way, especially जब उनके पास एक transfer window थी. You know, let's be honest about that. Even Pulisic will, even in the last game, why he played the false 9. Come on, he cannot do that. He can, but he really
should not be doing that. अरे big up कैसे हो भाई? All the best with English. ETH Potter. Oh my God, let's see man, let's see. That's a nice FIFA tonight on Almighty Sports. नहीं यार, आज तो नहीं होगा, लेकिन definitely we have to start FIFA again. FIFA 22 यार 2022 में we have to do at least couple more seasons. तो भाई मुझे आएंगे भाई, डेफिनेटली हम आएंगे, शॉर्ट स्ट्रीम करते हैं, लेकिन वो ये ना, अब it's a very very defining period for Chelsea, even Premier League में बोलता हूँ, to some extent Champions League, तो डिस्कस करना थोड़ा बनता था in terms of what people are expecting, getting their views, and of course what न्यूज हमें आ रही है. बाय द वे, मैं क्विकली देखना चाहूंगा ट्विटर में, क्योंकि अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूज कमिंग इन, पीपल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट अंटिल वो कंफर्म है. अभी लेकिन मोर लेस वो फॉर्मली होगा, एज मच एज यू आर सीइंग. ठीक है, तो यहाँ पे द बेस्ट पार्ट इज टूकल इज सॉरी टूकल, अभी तक टूकल नाम ले रहा हूँ भाई. कैन यू इमेजिन, पॉटर इज अ मैनेजर भाई. अंकित याद रख, पॉटर इज अगेन वेरी पॉजिटिव इन द वे स्पीकिंग. आप बोलोगे प्रिटी ऑब्वियस, दैट्स व्हाट ही इज गोइंग टू से, बट he's developing, he's wanting to develop a team and a culture. Again, he's a psychology student, remember that we have learned today. So hopefully he is having that man management zyada than Tuchel ka USP was handling the media, in my opinion. He did pretty well despite we went through, but we don't know, behind playing, what he did with the players, well, in terms of speaking what language, because काफी frustration दिख रही थी on the sidelines. That is something that maybe आज के दिन में players don't want. Let's see. But again, is he the perfect option, Graham Potter? Obviously not. But अगर पॉचिटिनो ऑप्शन था तो डेफिनेटली मैं जाता पॉटर के साथ. लेट्स पुट इट दैट वे, सिंपल एज दैट, राइट? लेकिन हाँ, इकबाली ने बोला है भाई, जो को-ओनर है, वी आर फॉर्चुनेट टू हैव ग्राहम एंड हिज टीम एज अ पार्टनर्स इन दैट जर्नी. वेल, ऑल द बेस्ट टू हिम एज वेल. इकबाली भाई, दे हैव पुट इन बिलियंस, सो अगेन टाइम विल टेल. अगेन नॉट लाइकिंग इट रियली, सच में बोलूं तो, लेकिन वी हैव टू लिव विद इट. लाइफ गोज ऑन यार, द शो मस्ट गो ऑन. Adam would be interim, definitely. Tuchel OP, thanks Amana, Aditya, Justwaila, absolutely. Your take on no attackers, ये कर दिया था हमने. Tuchel OP, तन्मय भी thanks यार, definitely thanks, big up to Tuchel, 100%. If we even want to switch back four, we need a tall, strong leader as CDM. That's Rice. Zakaria can be that guy. Zakaria काफी tall है, लेकिन वही है, easy playing week in week out for Chelsea and the English Premier League, I doubt it at this point in time. That's the only question mark. अगर वो करते हैं खुद, first few performances crucial. Yes, people मुझे खुद ट्रोल किए भाई, मैं एडमिट करता हूँ, मुझे खुद डीएम मिले भाई, जकारिया किसको ला दिया भाई लास्ट में, साउल ही नहीं, ये तो बाकियों को निकलेगा, लोग बोले मुझे. लेकिन अगेन लेट्स सी, टाइम विल टेल. मैंने तो बोला इज नॉट अ बैड, टू बैड अ प्लेयर. यूवेंटस में he didn't do as bad as people think he did, but it was Juventus, it was Serie A. 8744, big up bro, how are you? And again, Barca fan of the house, 8744 is the content creator as well. Do check him out if possible, people, definitely. गैल्टियर भी इतना रिनाउंड नहीं था, कोच था अच्छा, बट इतना लोग नहीं जानते थे पीएसजी के पहले. मे बी पॉटर भी क्लिक हो जाए चेल्सी में. अरे आपके मुंह में घी शक्कर यार देव ज्योति, आपको क्या पसंद है वो है आपके मुंह में, लेकिन डिफरेंस बीइंग दैट, देखिए लीग में एज मच एज मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, आई डोंट वांट टू डिसरेस्पेक्ट देम. बाय द वे, यहाँ पर आई कैन सी साइलेंस फॉर क्वीन एलिजाबेथ, सो रियली रेस्ट इन पीस टू हर. देयर इज अ साइलेंस बीइंग मेंटेन एज अ मैच इज रीस्टार्टिंग. लेकिन आई वुड क्विकली से देवज्योतु दैट, देखिए व्हेन इट कम्स टू लीग ना, वीक इन वीक आउट वाला प्रेशर नहीं डील करते यार. डेफिनेटली आप बोलोगे यार एम्बापे, मेसी और नेमार है तो प्रेशर तो होगा ही. और फैंस लाइक अस पुट द प्रेशर, आई विल नॉट डिनाई दैट. लेकिन एक होता है ना लोकल मीडिया वाला प्रेशर इन टर्म्स ऑफ ड्रॉपिंग पॉइंट्स, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वहां कम है. यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इज लाइक एवरी वीक आप ड्रॉप कर सकते हो, तो प्रेशर बने इट गोज ऑन एन एक्सपोनेंशियल लेवल. दैट इज समथिंग दैट इवन इफ आज के दिन में टॉड बॉली बोले ना भाई, वील वेट यार टिल दिसंबर, फिर देखते, वी आर वेटिंग फॉर 5 years, देखते. ट्रस्ट मी, things change very quickly. And I just gave the example of Tuchel 10 months ago and 12 months ago versus 6 months ago. Things change. And while I don't agree, why do those things change? Lekin bhai, that is the nature of football in England, especially. Remember, we thought Tuchel to be a pragmatist when he came in, but where was the flexibility? Well, again, Tuchel ने flexibility नहीं दिखाई है during the last weeks of last year, in my opinion. He was a bit too safe in trying to be securing the top 4 and not just going for it. Yes, और कुछ पॉसिबल नहीं था, लेकिन आई थॉट इट वाज द बिगेस्ट एक्सक्यूज फॉर हिम टू गो दैट. इस सीजन में आई विल हैव टू एक्चुअली गिव हिम द क्रेडिट. वो ट्राई कर रहे थे, इट जस्ट बैकफायर्ड. दीपांजन, इट इज वही है, वो ही वाज ट्राइंग, ट्रस्टिंग दैट ही इज हियर फॉर 100 more, जो खुद बोले थे, जो हमने डिस्कस किया था इन द बिगिनिंग.
अरे पता नहीं यार, एक मैच तो शायद नेक्स्ट वीक का मैच पोस्टपोन हो रहा है. आई थिंक दैट इज ब्राइटन एंड फुलम, बट अगेन दैट इज बिकॉज ऑफ सम रियल कंस्ट्रक्शन आई बिलीव. यूनाइटेड मैच पोस्टपोन ड्यू टू डिमाइज ऑफ क्वीन. लेट्स सी मैन, आई डोंट नो मैन, लेट्स सी. आज का मैच होगा पता नहीं यार, अंकित अभी देखते हैं. न्यूज विल स्टार्ट ट्रिकलिंग थ्रू. I'll just check it up on Twitter as well. Isn't Potter too small name in the football world than the Chelsea players? No, Manu, I just showed the stats now. मतलब आप देखिए, a person who was managed in Sweden with the lowest division of football. अरे nice defense by Zurich by Arsenal almost scored. But that kind of person coming to Swansea and then coming to basically Brighton and doing madness in Brighton in terms of gameplay, और जो पहले फिनिश नहीं कर रहे थे, then this season they're finishing. लेकिन can you judge on just 6 games this season? No. तो time will tell. Yes, definitely उनका best कप रन रहा है, where he won a cup with Sweden, और मे बी स्वीडिश साइड जो था उस साइड से he won, he beat Arsenal. Talk about Arsenal doing a watch along. तो that was what happening एक मैच में, but इन्होंने नहीं किया. तो I agree that he is not even handled big players, man. Leave apart him being compared to big players. Okay. Oh my God. Pramit, come on. Rest in peace, यार. Absolutely. जिंती, थैंक्स अगेन पीपल यार, जो भी आ रहे हैं भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिए मत टू बोथ आवर चैनल्स, ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस एंड ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. और यहाँ पर अगेन मेरे द्वारा एक प्ली यार, क्विकली, आई नो थोड़ा सा मैं भाषण दे रहा हूँ, बोर कर रहा होगा एक सेकंड के लिए, लेकिन सुन लीजिए प्लीज. अरे बढ़िया शॉट यार, लेकिन नहीं हुआ गोल ओवर द टॉप आर्सेनल का. लेकिन देखिए, आउट ऑफ जो भी लोग देखते हैं ना मेरे चैनल, 70%, 70% पीपल हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, एंड दैट्स अ बिट टू मच देन यूट्यूब एवरेज डेटा, बिट टू मच. तो लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, अगर 30-40% सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर भी समझ में आ सकता है मुझे. 70% ऑफ पीपल हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल. एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रो, एवरीवन भाई, जो भी देख रहा है, जो बीट इन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, बीट इन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. यस, आप मेंबर्स बन सकते हो, मेंबर्स के लिए प्रेडिक्शन लीग है, वहां पर प्राइस होंगे. ऑफ कोर्स एफपीएल भी है, वो सब वो, लेकिन एफपीएल तो सबके लिए है. एंड बाय द वे, टॉकिंग अबाउट प्रेडिक्शन लीग भाई, यूसीएल के लिए भी मैंने डाला था, एंड आई हैव टू अपडेट द स्कोर्स बिफोर टुमारोज प्रीव्यू टू द वीकेंड स्ट्रीम. तो हाँ, एफपीएल टॉक्स भी करेंगे कल होपफुली. अगेन आई थिंक इट माइट बी एक दिन की छुट्टी होगी, नेशनल हॉलिडे इज व्हाट आई एम गेसिंग. कम ऑन, दे वोंट गिव 2 weeks as much as she will be respected for sure, and rest in peace again. From last season I saw Brighton play and wished a personality like Graham Potter could manage Chelsea, but there's no way I wish TT to be sacked. Can't have both ways. Samir, I hear you absolutely bro. मतलब मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, I always want that. Yes, we have that pragmatism. Chelsea में counter attacking style होती है, एक resilience due to which I always loved Chelsea yesteryears में. लेकिन एट द सेम टाइम मैं चाहता था, फॉर मी वन ऑफ द मोस्ट अनफेयर सैकिंग जो है ना टुकल, तो वही, अनफेयर नहीं बोलूंगा लेकिन शॉकिंग. अनफेयर तो काफी हुए चेल्सी में, वो तो उसके तो बात नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट अनफेयर एंचेलोटी वाज मोस्ट अनफेयर भाई. जो हम फुटबॉल खेलते थे ना एंचेलोटी, वाओ वाओ, दैट काइंड ऑफ फुटबॉल, और वो चीज वापस चेल्सी में चाहिए एट सम पॉइंट. मैं झूठ नहीं बोलूंगा यहाँ पर. मे बी पॉटर लाए, वो मे बी लाए, आई एम होपिंग. लेकिन अगेन टुकल को आप देखोगे तो डॉर्टमंड में, आई शुड लव द वे डॉर्टमंड प्लेड टुकल, एंड डॉर्टमंड प्लेड फुटबॉल अंडर टुकल, दे डिडंट प्ले टुकल, दे प्लेड फुटबॉल अंडर टुकल. तो यू नेवर नो, जूरी इज आउट. यस, ही इज कमिंग द सेम लीग कंपेयर टू टुकल भाई, लेकिन अलग पर्सनल है, थोड़ा टाइम लगेगा. नो फुटबॉल फॉर 2 weeks, सीरियस है क्या? अरे ये क्या मतलब, सोर्स बताइए यार, सच में? नहीं यार, 2 हफ्ते के लिए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. Are you for serious? भाई already it's मतलब, all due respect to the Queen यार, rest in peace, absolutely, don't get me wrong people, but don't you think that basically it is a मतलब it's a jam packed calendar यार. Pretty sure 2 हफ्ते नहीं कर सकते यार without football. Yeah, absolutely. I understand Ole was a United legend as a player. I felt maybe I felt about Lampard that way, to be very honest. Pep is a fan of Potter. Who isn't a fan of Potter? कोई भी आपने सुना है जो पॉटर अच्छा नहीं है? Only thing they have said is, जो मैंने आज लाइव वही डिस्कस कर रहा था, मैंने वेंट लाइव अगेन, ऑनर टू बी देयर ऑन सोनी टीवी. What I said is that the only problem is he has not managed those big egos in a big club. That is the only thing. It's about experience. It's not about him being bad. But again, आप जब तक एक्सपीरियंस दोगे नहीं, तब बनेगी कब तक. पॉल रॉबिन्सन ने सेड यार, एक्स टॉटनम प्लेयर एंड इंग्लैंड गोलकीपर, उन्होंने भी सेम चीज बोला है. बट
should Chelsea have taken that risk? Time will tell. इतने billions और millions spend करने के बाद, respectively for buying the club as well as for transfer window. Out of your opinion on Brendan Rodgers manager of Chelsea in a parallel universe? अरे नहीं यार, मैंने कल हाथ जोड़ा था जिनके, हाथ जोड़ा था. Yes, he is an ex Chelsea coach. जो जिनको नहीं मालूम है, Brendan Rodgers has been at basically Cobham. बहुत बहुत टाइम स्पेंड किया है ब्रेंडन रॉजर्स ने. लेकिन come on, let's be honest. Talking about egos, bhai, he cannot do that. He cannot do that. He couldn't even manage a Fofana, bhai. Talk about it. लास्ट में ही गेव इन टू फफाना. कैन यू बिलीव इट भाई? लास्ट में उन्होंने बोला है कि फफाना वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, व्हिच इज एक्चुअली इवन एज अ चेल्सी फैन मैं बोलता हूं नहीं, देयर वाज अ मिस्टेक जो फफाना किए थे इन टर्म्स ऑफ ऑफ फील्ड इश्यूज. लेकिन अगेन थोड़ा डिबेटेबल है. Best football ever seen in the bridge was under Don Carlo. These owners run clubs as if running company, too much business. हाँ अजिंक्य, पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट यार. आप देखिए, इट इज नो कोइंसिडेंस 100 डे पर हुआ है ये ऑफ देयर ओनरशिप. इट इज नो कोइंसिडेंस 100 गेम के बाद हुआ है. इट इज नो कोइंसिडेंस दैट फर्स्ट मैच डे में हुआ है. इट इज नो कोइंसिडेंस दैट हुआ है एट अ टाइम जहां पर वो देख रहे हैं देयर इज इनफ रूम फॉर द न्यू मैनेजर टू कम एंड प्रूव हिमसेल्फ. तो दीज 4 रीजन जो मैंने बोला है, दिट पॉइंट्स टू purely numbers game. But it was more than that. Arsenal with a good shot on target, लेकिन goalkeeper saved. Meanwhile, it's still 1-1 people. Pray करूंगा Potter click का. अरे I hope यार, I hope. Again, Arsenal तो नहीं बनना चाहूंगा देवज्योति, लेकिन much better. Let's be. Why not, man? Why not? मतलब I know every day is not a Sunday. Conte ने जो किया था, madness किया था after coming to Chelsea. I won't mind that either. सच में बोल दो. Possession-based attacking style of football we are trying to play now will require us to stick to manager. The counter-attacking style we played earlier has worked the hire and fire way. Yeah, it relates exactly. It relates to off-field as well as on-field. बहुत ही अच्छा, comparison with Dipanjan. बहुत ही अच्छा लगा मुझे. Please put a community post with the link where you can watch U10 today. मैंने डाला है One Buzz. Yes, thanks for reminding me. ये shout out है. Let me just show it to you. मैं actually right away भी दिखा सकता हूँ if I'm not wrong, right? Of course, I may not show you the video. लेकिन if I'm not wrong, I have put in my community post at least, जहाँ तक मुझे मालूम है. Again, everyone watching, भैया भूलना मत, please like the stream. और yes, absolutely shout out है for everyone involved with backing me being on the Sony TV, of course. Second time, yes, I was lucky enough to second time. Hopefully इस बार भाई it doesn't, third time doesn't come when हम बवाल मचाए जब क्लब में. I comes at a normal time as well. लेकिन मैंने शायद किया है. This is what I had shared. तो ये मेरा community post है, तो आप देख सकते हो. तो इट इज डेफिनेटली देयर. देखो मैं सब नाम भी दिया हूँ, तो इट्स डेफिनेटली देयर. आप जाकर आराम से देख सकते हो. फर्स्ट 40 मिनट्स ऑलमोस्ट आई वाज देयर. तो अगेन बिग शाउट आउट है टू द पैनल देयर एंड ऑफ कोर्स एवरीवन इन्वॉल्वड इन सपोर्टिंग मी. डू यू थिंक बर्ली विल पुट एम्फोसिस ऑन होम ग्रोन टैलेंट्स? आई डोंट थिंक इट्स अबाउट होम ग्रोन टैलेंट्स इन पर्टिकुलर, बिकॉज देखिए ही इज मोर अबाउट जस्ट फाइंडिंग टैलेंट. इट्स नॉट जस्ट हिम. अगेन इट्स एंटायर जो है ना डेटा ड्रिवन जो उनका जो स्ट्रेटजी है. गॉर्डन, हमने इसका कल शेयर किया था. गॉर्डन वाज वन ऑफ द रीजंस जो वेयर देयर इज अ डिसएग्रीमेंट. बर्ली एंड को बिलीव्ड इन गॉर्डन, टूकल डिड नॉट. बर्ली एंड को बिलीव इन ब्रोया, टूकल डिड नॉट. बर्ली एंड को बिलीव इन चालोबा, टूकल डिड नॉट. अगेन एज पर रिपोर्ट, सो आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट इज रियली ट्रू. Acha, shot on goal again, Arsenal, but still. So the idea is they've got in Chukwuemeka, they've got in Cassidy, they've got obviously Pulisic, Mount, Havertz, who are top players in their youth days already. They've got Kukurea, they've got basically who else मैं miss कर रहा हूँ, Fofana who's a youngster, as in the next big thing हो सकते हैं. So अभी के लिए I don't think और ज़्यादा youngsters के बाहर जाएंगे. But homegrown, I get your point, because I know as a matter of fact कि बैचुआई जो लास्ट डे ऑफ ट्रांसफर विंडो में उनका जो फॉलो आउट हो गया था विद नॉटिंघम फॉरेस्ट, ही डिड नॉट एक्चुअली मूव थ्रू, राइट, बिकॉज ऑफ द पेपर वर्क गोइंग लेट, एंड फाइनली वेंट टू फेनेrbahce. तो ही वुड हैव बीन द 18th नॉन ईयू वाले कैटेगरी में प्लेयर. तो वहां पर ओनली 17 इज अलाउड इन द प्रीमियर लीग फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड. तो आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट अबाउट होम ग्रोन. आई थिंक देयर विल बी अ बैलेंस इन द टू, क्योंकि काफी टैलेंट ऑलरेडी बाई कर लिए ये. बस नेक्स्ट मैच हम अच्छा खेले. वेल लेट्स सी यार, आई होप फॉर द बेस्ट. चलो नो प्रॉब्लम भैया. ये सब डिस्कॉर्ड विद बोर्ड की कहानी झूठ भी हो. बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. डोंट टेक एवरीथिंग एज इट इज. वी हैव नॉट हर्ड थॉमस टुचल साइड ऑफ द स्टोरी, हैव वी? और वो भी अगर आकर बोलेंगे भी, व्हाट इज द गारंटी, व्हाट इज द गारंटी दैट इट विल बी बेसिकली इन मतलब एक होता है ना, एक सॉल्टी नहीं हूँ थॉमस टुचल, हु नोज. तो अगेन no one will really know unless
हमें एक मिले एक प्रॉपर ऑल और नथिंग वाला, विच आई रियली डोंट होप, लेकिन ऑल और नथिंग वाला एक है कि बिहाइंड बिहाइंड जो लोग बात कर रहे थे कैमरास थे एंड देन एक मूवी है, हु नोस. बट अगेन बिग अप टू थॉमस टुकल, मच रेस्पेक्ट. आई स्टिल डोंट एक रिलेट नहीं हो रहा कि ही इज आउट ऑफ चेल्सी. हाँ, मैंने फोटो दिखाया अबाउट हिम गोइंग रियली सैडनिंग, लेकिन द फैक्ट इज पॉटर इज कम, वी हैव टू बैक हिम. आई नो काफी लोग हैरी पॉटर हैरी पॉटर, मैंने खुद पोल में डाला था, लेकिन वही है, थोड़ा सा ऑल्टरनेस आएगा स्लोली बट स्टेडीली. यू हैव टू अब्सॉर्ब, और उनकी कोई गलती नहीं है. ही प्लेज वेरी गुड ब्रांड ऑफ फुटबॉल. ही इज एन इंग्लिश मैन. हाँ, रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन. प्लस एक होता है ना कि यार एक लो एक्सपेक्टेशन से शुरू करते तो यू ऑलवेज काइंड ऑफ बी हैप्पियर, जो थॉमस टूकल के अंडर था. रिमेंबर फर्स्ट सीजन आई डिडंट एक्सपेक्ट टू विन द चैंपियंस लीग एनीवे क्लोज, प्रीटी श्योर आप लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे. तो वही चीज है. लेकिन हाँ, प्रेशर विल बी ऑन. अभिषेक इन द हाउस. Abhishek, thanks for coming on. Member of Almighty Blues FC, of course. How are you taking Graham Potter recruitment? He's a good manager. May not have experience, but I love his play from back and possession-based football. ठीक है. तो apart from the football, which I'm really looking forward to, Abhishek, I am looking forward to his usage of certain players. Will he be an over pragmatic manager to begin with, क्योंकि pressure will be on, or will he be that same Brighton manager जो हमें दिखता था कि एक बिंदास खेलेगा भाई no matter what, और they were going for attacks after attacks after attacks. Talk about attack. Arsenal have an attack down the left wing, लेकिन नहीं यार, मार्टिनेली ने मार दिया छक्का स्टेडियम के बाहर. लेकिन हाँ, वही है ना, मतलब एक बिंदास एटीट्यूड के साथ खेलेंगे. ब्राइटन मिस्ड लॉट ऑफ चांसेस, वी आल्सो डू, लेकिन दे कंटिन्यूड. विल बी एबल टू कंटिन्यू? हम कंसीड भी करेंगे. देयर विन परसेंटेज 31% था ओवर 3 इयर्स. इट वाज एक्सेप्टेबल टू एन एक्सटेंट. हमारा 62% भी माइट बी आर्ग्यूबल टू बी एक्सेप्टेबल, बिकॉज टूकल का ही 60% था ओवरऑल. And yes, Matata United, much love, absolutely. Fire contract is quite some statement from the club. It is again maybe वो खुद पर कुल्हाड़ी मारना बोलो, या खुद पर बेसिकली एक एक सेफ्टी वाल्व की नहीं भाई हम टेम्प्ट हो जाएंगे तो हम नहीं करते, लंबा देते. यू नेवर नो. अगेन दिस इज प्रोबेबली ह्यूज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड जो हम बोलते थे अबाउट बारसा एंटायर सीजन. दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट चेल्सी राइट नाउ. रियली नॉट, इट्स इवन मच वर्स इन फैक्ट चेल्सी का अभी. बट वी हैव टू बैक देम. और yes people, let's get to likes. भाई 300 likes हो जाने चाहिए, to be very honest about it. There are a lot of people watching. Hopefully we get to 300 likes as well. People let me know कितने likes हुए हैं. And yes, again मैं shout out दे रहा हूँ भाई, Almighty Sports Plus, Football versus Cancer, and Chelsea Perspective as well, not just Almighty Blues FC. तो भाई please, it will mean a lot. Just a press of a button, but bell notification icon भी दबाइए. According to sources, Brendan Rodgers told Todd Boehly he doesn't need convincing, he would ASAP if giving green. I don't know man. Brendan Rodgers के last time भी आया था, I remember that very well, जब थॉमस चुकल आ रहे थे ना. But I don't think so वो हुआ है. Again reports, again मैं हर एक रिपोर्ट नहीं बिलीव कर रहा यार, to be very honest. मैं देख ही रहा हूँ यार, the kind of sources that I actually believe in, मैं देख ही रहा हूँ reports. To be very honest, I wouldn't go that way. It'll rather be basically that एक होता है ना priority. That first priority was Potter, second priority was Pochettino, third priority was as per reports Zidane, fourth priority was Brendan Rodgers. पॉटर और टुकल दोनों ही ऑलमोस्ट सेम स्टाइल है. लुकाको फिट नहीं होगा, ओबा काइल याओ ब्रोया इजीली फिट हो जाएगा. वेल ओनली थिंग इज अबाउट, आप अगर टुकल की बात कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही स्टार्टेड ऑफ विद चेल्सी, आई एग्री विद यू. बट पॉटर ऑफ लेट इज प्रोबेबली मच मोर फ्लेक्सिबल मैनेजर देन अ टुकल व्हाट ही हैज बीन, सिंपल एज दैट. तो वहां पर मैं चाहूंगा कि यार ही एटलीस्ट ट्राइज देम. लुकाको तो आई डेफिनेटली अग्री. टूकल, हाँ मैंने भी एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे लग रहा था यार ही विल जस्ट टेक अ ब्रेक, ही प्रोबब्ली डिजर्व्स वन एज वेल, एंड आई कैन सी हिम गोइंग टू रियल मैड्रिड. आई माइट बी रॉन्ग, अगेन मे बी इट्स इन लाइन विद माय प्रेडिक्शन कि भाई रियल मैड्रिड इस बार ला लीगा जस्ट अबाउट मिस कर लेगी, एंड मे बी इट माइट बी टाइम फॉर कार्लो टू एज इन hang up his socks. I don't know, hang up his boots. You tell me. As in, what do you all think? He deserves like a top club. He deserves a top club. No disrespect to any club यहाँ पर. And yes, people are saying Leipzig. Why not? Come on. As in, yes, अगर उसके पास एक है कि भाई I'm better a bigger fish in a smaller pond and get them up like what he was in a Dortmund to some extent, not really. लेकिन हाँ, Leipzig have invested a lot of money in terms of forwards, but still I don't see Leipzig kind of getting the better of Bayern Munich. He's a very ambitious guy, let me tell you. Oh my god. Manav, come on. I still have to come to terms. Exactly. मैंने तो यार, I don't know if you can sense it, but I'm not come to terms to maybe Fulham में हमें दिखेगा ना,
Potter. Maybe that is what Fulham ke match mein, which we'll be discussing tomorrow in terms of starting lineups and whatnot. And I know press conferences honge that then we'll probably get to know better. Director of football, depending on that, a lot of it has to be related. I'm pretty sure. Nahi, I don't think he'll fit in. But again, chance ho sakta hai de. That is at best I would say. Wow, ऐसा है क्या? Really? Man, ये तो breaking news है. Breaking news, man, for Manchester United fans by Real Sociedad, which is again not a very easy team, but again, I would not say very difficult. Lindelof, Maguire, रोनाल्डो, कैसेमीरो स्टार्टिंग. तो डज दैट मीन दैट प्रीमियर लीग की वो जो टीम है वो चेंज नहीं करना चाह रहे, प्रीमियर लीग में वही खिलाएंगे? दैट्स माय गेस. बट अगेन जो भी बोल रहे भाई, क्वीन एलिजाबेथ, यस, रेस्ट इन पीस, एब्सोल्युटली वो ट्रू है. बट लाइनअप्स आ गए यार. तो लुक्स लाइक मैच इज हैपनिंग, राइट? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. बट अरे रियल सोसाइटी में सादिक भाई है. सॉरी मैन, सादिक भाई, मच लव यार, आई लव यू ब्रो, एब्सोल्युटली. लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स David Silva है. I think Sadiq is actually a good player, by the way. Kubo, I think he's been spoken about enough by, especially talking about Real Madrid. He's been spoken about enough. Zubi Mendy, of course. तो भाई काफी difficult हो सकता है. Merino obviously is pretty much sound. So I don't think it's as easy as what it looks to be, especially जो second team खिला रहे हैं with Fred, Casemiro and Eriksen दिखा रहे. Let's see how they play. They might actually go with a 4-2-3-1 try करे इस match में, I'm guessing, with Eriksen in behind Ronaldo, considering that Casemiro is a destroyer as well as someone who can do bit more than usual. Oh, गोल हो गया यार, आर्सेनल का गोल. भाई पीपल, आर्सेनल का गोल हो गया, सेकंड गोल. एंड यस, एनकेटिया है क्या? एनकेटिया ने मार दिया शायद, लग रहा है. 62nd minute and Zurich one down, and yes, it's Enketia. It's 1-2 to Arsenal. भाई अबे अच्छा विक्ट्री हो सकता है. And yes, people get in the chat with the predictions for Manchester United Real Sociedad. मैंने तो बोला 2-1. It's a home victory. Let me know in the chat. Hopefully the match goes on. Again, rest in peace to Queen Elizabeth, and of course congratulations to Arsenal as well for the second goal. ये वीडियो जोसे मिनट. अरे ये कहाँ से लाते हो भाई, डरे ना आप. अरे यार, मरवाओगे आप. Jose Mourinho only because he managed Tottenham and Manchester United. बोल दिया बस. बोल दिया. And he sold KDB. इतना बोलूंगा. रॉबिन को भी उन्होंने ही बेचा था technically, right? Anyway, I just said it, but I love the guys, you know it. Yeah, it is definitely Syed है, अपने ही Syed है, definitely. By the way, this shout out goes out to all the members out there as well as the mods. भाई मतलब आप लोग भी अगर चाहो तो आपको तो पता है भाई, जो हमारे चैनल के साथ हुआ था मार्च में, उसके पहले everyone and anyone was invited to the channel. अभी क्या करेंगे ना, we are having lot of streams planned when football थोड़ा सा धीमा हो जाए in between, and then we'll have basically some sessions maybe on Discord or maybe member streams यहाँ पर. तो maybe we'll give the opportunity as well, slowly but steadily, right? Hopefully. इस वीक क्या प्रीमियर लीग में मैच नहीं होंगे? लुक्स लाइक इट हैपन, कंसीडरिंग अभी तो हो रहा है भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड का, अनलेस आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी. आई कैन सी नाउ ओबा प्लेइंग ऑन द लेफ्ट विद स्टर्लिंग और हैवर्ट्स प्लेइंग फॉल्स 9. वाओ. Abhishek, I don't think so, yaar. I don't think so. I think the fact that he's used proper wingers, यार. He's used March और आप देखो, सॉरी, March और ट्रोसार्ड को प्रॉपर यूज किया है. रिमेंबर, I know he likes a second striker. उनको अच्छा लगता है. मतलब if you see formation ना, even a 4-4-2, they don't play a two up front. It's like a second striker, like if I'm not wrong, Pascal Gross kind of plays that way. Trossard has at times has played that way. So मुझे नहीं लगता he will go away from the width. हाँ, you still have width from wing backs, लेकिन वहां पर हम predictable हो जाते हैं ना अभिषेक. That's my take the long run. अब देखते short term में he might continue this जो हम कर रहे हैं. We saw Chelsea lose a few players to other clubs due to the so-called pull. With Roman and Tuchel gone, wouldn't मानव के लिए क्लैप यार. मैंने बोला है पुल वही है. Will Potter have the pull? Will Boehly have the pull? Especially Boehly after sacking Tuchel the way he did. Ruthless. Probably it's a great point. हाँ तो यार प्रेडिक्शन लीग है मेंबर्स का जो चल रहा है ना. हाँ, मैं खाली मेंबर्स को मैसेज करता हूँ. मे बी वंस आई शुड मैसेज एवरीवन एज वेल. तो यार मेंबर्स के लिए प्रेडिक्शन लीग है. द विनर एट द एंड ऑफ सीजन विल गेट अ प्राइज एज वेल. अगेन, do get us to 50 members, do get us to 10k subscribers to the end of the season. Hopefully you will on both the channels.
लेकिन डेफिनेटली इट्स डेफिनेटली ऑन। और मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ फॉर द टॉप 3। तो फर्स्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एज ऑफ नाउ मैंने चैंपियंस लीग वाला इंक्लूड नहीं किया अभी तक, तो कंडीशंस अप्लाई। ये है फर्स्ट, मानव है, मानव बगा इज ऑन टॉप, यस। सेकंड जस्ट अबाउट इज मेसी, विच इज तौफिक। द थर्ड, मेसी अपने जो मेंबर इन द चैट आप देख रहे हो, और थर्ड है श्रेय पाटिल, उनको भी शाउट आउट एब्सोल्युटली। बाय द वे, श्रेय पाटिल को भी एक्स्ट्रा शाउट आउट है भाई, हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं भाई श्रेय पाटिल। आज मैं स्काइप में जा रहा था विद सोनी, एंड देन ऑन शॉर्ट नोटिस भाई श्रेय पाटिल आ गए भाई मेरे साथ। ही डिड टेस्टिंग एज वेल, सो हैट्स ऑफ, हमेशा हेल्प्स मी एज वेल। केडीबी और एडीबी come on, ABD, you mean, come on, ABD 100% यार, come on, 100%. Imagine Ziyech and Pulisic attitude against 2004 Jose. अरे भूल जाओ। अरे जोसे मोरिन्यो डिड वो टू केविन डे ब्रुयना टॉकिंग अबाउट केडीबी आफ्टर वन गेम ब्रो, हल सिटी के साथ। तब आप सोच ही सकते हो। अरे नो प्रॉब्लम, गुड नाइट टू यू एज वेल, एब्सोल्युटली। नहीं गुड, इतनी गड़बड़ कुछ नहीं है, वो ये बेसिकली मैं सब्स्टिट्यूट नहीं किया था। बाय द वे, यूसीएल फैंटेसी एज वेल, फॉर पीपल हु डोंट नो भाई, देयर इज अ यूसीएल फैंटेसी गोइंग ऑन एज वेल। हाँ, वहां पर मैंने प्राइस का अनाउंस नहीं किया बिकॉज वहां पर इतने अभी तक कंटेस्टेंट्स नहीं है, लेकिन आ जाएंगे तो वहां का भी आई कैन टेल यू, आई कैन थिंक ऑफ अ प्राइस। अगर हमारी चैनल ग्रोथ होती है तो विल गो फॉर 3 प्राइजेस इन सीजन, 1 फॉर एफपीएल, 1 फॉर नहीं, एक्चुअली 2 फॉर एफपीएल मैंने बोला ना, 1 नॉकआउट वाला एफपीएल जो है हेड टू हेड वाला, एक प्रॉपर लीग वाला, एक है अपना प्रेडिक्शन लीग फॉर मेंबर्स, एंड ऑफ कोर्स एक यूएफए चैंपियंस लीग वाला। अगर इफ यू आर हैविंग इनफ मेंबर्स, अभी के लिए आई डोंट थिंक देयर आर मेनी। लेट मी जस्ट लॉग इन क्विकली एंड सी व्हाट इज माय स्कोर। आप लोग भी अपने स्कोर बता दो अगर आप लोग खेल रहे हो यूसीएल फैंटेसी। एंड आई नो इस वीक थोड़ा सा यूसीएल और यूईएल का इतने सारे बातें हम नहीं किए, प्रीव्यू शो एक्सेट्रा प्रीव्यू किए थे, लेकिन अगेन आज नहीं किए थे, फॉर एग्जांपल फॉर यूरोपा लीग, क्योंकि आप जानते हो यार न्यूज लास्ट 24 घंटे में क्या हुआ है। मी बीइंग फॉलोइंग चेल्सी फॉर 23 इयर्स, हैविंग सीन, एक होता है ना सर्कस कंटिन्यूज वाला चीज, तो मुझे इट वाज अ सेटबैक, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू। प्लस द फैक्ट दैट आई वाज लकी इनफ टू बी लाइव ऑन सोनी टीवी आज, सो आई कुडंट डू अ प्रीव्यू शो, आई हैड प्लान्ड इट अर्लियर। नहीं तो क्या कर सकते हैं, इट इज व्हाट इट इज। तो यार यहाँ पर मैं जा रहा हूँ गेमिंग में, और मैं देख रहा हूँ कि फैंटेसी में कितना हुआ है। और ये सब लोग भाई, आप लोग अपने भी बता दो इफ यू आर टेकिंग पार्ट ऑन। बाय द वे, आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल हु आर देयर वाचिंग, लेकिन आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई फॉर वॉट एवर रीजन हिट दैट सब्सक्राइब बटन, नॉट जस्ट द लाइक बटन। इट्स अ रेड बटन ऑन योर बॉटम राइट भाई, इट डजंट कॉस्ट यू, एब्सोल्युटली फ्री है। और मैं खुद 350 चैनल्स को सब्सक्राइब कर चुका हूँ फ्रॉम बोथ द चैनल्स, टॉक अबाउट दैट। अच्छा, ऑलमोस्ट स्कोर्ड यार ज्यूरिक, लेकिन बच गए यार आर्सेनल, जस्ट अबाउट ऑफ साइड था, कोई नहीं। ओके सो मेरी टीम तो हगी है एज यूजुअल। कुछ नया है भाई तो आप बोलोगे अंकित भाई आप कुछ नया बोलो, लेकिन आपको माला यार, मैं लास्ट पॉइंट में लीग, खाली लीग क्रिएट करने के लिए मेरे बहाने शुरू हो गए मेरे लीग क्रिएट करने के लिए क्रिएट किया था टीम बस, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यार आई वोंट बी एलिजिबल फॉर दैट शाउट आउट एंड टॉप स्पॉट एनीवे, लेकिन मैं बैंटर के लिए खेलता हूँ बस। ये है, देखिए, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है, लेट मी एक्चुअली, एक सेकंड दीजिए मुझे, बहुत ज्यादा विंडोज ओपन कर लिया मैंने, आई एम कंफ्यूज माई सेल्फ भाई, कंफ्यूज आ गए हो क्या? लेट मी सी, ओके चलो अब ठीक है। तो दिस इज माई टीम, ऑब्वियसली नॉट स्कोरिंग ग्रेट। मैंने क्या गलती, सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, आई कुड हैव गॉटन रेनिल्डो आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मैच डे, और आई कुड हैव गॉट टर्स चेकन, लेकिन वही है, आई वुड हैव सेव्ड व्हाट 3 मोर पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलता। डार्विन उन्होंने स्टार्ट नहीं किए, मेजर ड्रॉबैक, लेकिन अगेन 59 पॉइंट्स, पैथेटिक, pathetic is the word people, pathetic। एंड यहाँ पर 80 सेकंड है मेरे खुद के लीग में भाई, मेरा रैंक ये देखिए, सोनी 10 लीग में भी। अच्छा एनीवे देखते हैं भाई, 80 सेकंड, एबेनेजर ऑन टॉप, पीपल शाउट आउट है एबेनेजर को, बिल्कुल शाउट आउट है। आप पता नहीं देख सकते हो कि लेट मी मैक्सिमाइज अ लिटिल बिट मोर। मेरा तो भाई 80s में है रैंक। अगेन आप लोग कहाँ पर हो देख रहे हैं, हम देखते हैं क्विकली। आई एम जोसे मोरिन्यो, एक टीम नेम, गुड, आई एम जोसे मोरिन्यो, एक और टीम नेम, नाइस। चलो काफी लोग हैं भाई मेरे आगे। अगेन मैं क्विकली देख रहा हूँ यहाँ पे, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू। अगर आपका नाम होता तो खुद को शाउट आउट दे दीजिए भाई, मैं हाईलाइट कर दूंगा बाद में, लेकिन डेफिनेटली है शाउट आउट टू एवरीवन इन दिस लीग। ओके ओके, ओ माय गॉड भाई, काफी लोग ने अच्छा किया यार मेरे से, टॉक अबाउट इट, नाइस वन नाइस वन। अगेन शुरुआत है, अभी 5 मैचेस बाकी है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बेंजिमा ब्लैंक्ड, ओ हाँ, मैंने लकीली बेंजिमा को नहीं लिया था, बट अगेन
I probably should have gone for Lewandowski. मैं सोच ही रहा था भाई Lewandowski लूं कि नहीं लूं. 70 people running the UCL fantasy. Smoke some good pot. Kvaratskhelia only 4 points and I have Ronaldo and Modric to the bench. Oh, for 9 points each. यार मैंने भी Modric को लिया था यार. कोई नहीं. 74 pathetic. इंकुकू और हालैंड एज कैप्टन. यार लेफ्ट फील्ड याद रखिए यार. मेरा होता है ना, या तो हम हगेंगे या तो एकदम बढ़िया करेंगे. मेरा होता है लेफ्ट फील्ड चॉइस, क्योंकि सब लोग हालैंड ही जाएंगे तो डिफरेंस क्या है. वेयर विल यू गेन ऑन देम. तो वहां पर मैं सोचता भाई एंकू को हैट्रिक मार लेना कहीं से. आई नो लाइप्सी का मैनेजर सैक हो गया है एंड दे वर नॉट इन फॉर्म, बट मैंने लेफ्ट फील्ड चॉइस किया है. बट कोई नहीं, pathetic. But again, right, people, thanks a lot for being there. Yes, I'm trying to be as positive as possible, क्योंकि at some point in time मुझे भी लगता है भाई I have a certain responsibility. तो यहाँ पर as much as मैं भाई वही रोनी कंटिन्यू करूं with Tuchel, I can continue. लेकिन you have to say that I miss Tuchel. I will be missing him for at least a time, till the time that Potter actually wins me totally. Time लगेगा. Let's see what is his reaction. Again, the way Tuchel took us in the last 6 months off the pitch, मुझे तो लगता है he did lots, but again इमोशनल क्वेश्चन दिखता नहीं है बॉली को, बिकॉज दे जस्ट जॉइन द क्लब बहुत 2.5 महीने पहले यार. तो यू कैन इमेजिन, मतलब वो जो मीडिया में देख रहे हैं वही देख रहे होंगे. दे आर नॉट लिविंग और रादर experiencing it even as fans day in day out. And remember, Iqbali is was not even a Chelsea fan. I heard, it's just a reminder for people out there. लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार, मतलब reality is reality. मतलब we cannot go away from it. And yes, people, whoever has watched this stream, thanks a lot. Do not forget to subscribe as well to both our channels. We'll be back on both channels. Yes, cricket. आप बोलोगे why I'm not kind of continuing this week. Again, India has lost, not too great week. Again, congratulations for people going into the finals in the Asia Cup. हम आएंगे वापस cricket content with Asia, with Almighty Sports Plus. तो वहां पर हम आएंगे even with FPL and a lot more football content as well, especially international football towards the end of this month. So plan तो काफी है if you kind of back us, right? So hopefully you do back us. Interview and media from Chelsea for Potter. When? Well, again, hopefully कल रहेगा यार. हम कल स्ट्रीम करेंगे. Hopefully, if with Queen Elizabeth passing away, things don't change. Rest in peace again. But we'll try and cover that news tomorrow. लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहता था. पता नहीं if I'll be able to show it. Bhai, people, what do you think? And I genuinely am asking you. Last question before the stream ends. I know 90 minutes नहीं हुए, फिर भी मैं stream end कर रहा हूँ because it's been a tiring day, a very important day, of course, with being on Sony TV. Again, thanks. लेकिन एक चीज मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बिफोर गोइंग. व्हाट and genuinely I'm asking, what do you think Kukurea will react like looking at basically the guy that we're talking about? What do you really think, Kukurea? As in, trust me on that. एक होता है ना, Kukurea will be happy that basically he's getting that person जो he was kind of hoping. लेकिन आप लोग बोलिए, what do you think Kukurea will be reacting like? Again, I'll take the comments. लेकिन यहाँ पर मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ मीनवाइल, क्योंकि मेरे पास उसका जवाब है. आई हैव द जवाब फॉर बेसिकली कुकुरिया कैसे रिएक्ट करेंगे आफ्टर सीइंग पॉटर. मैं बार बार थॉमस टुकल बोल रहा हूँ गलती से, आई डोंट नो. आफ्टर सीइंग पॉटर व्हाट विल ही डू? लेट मी नो इन द चैट पीपल. मैं यहाँ ढूंढ ही रहा हूँ मीनवाइल. लेट्स सी. मेरे ख्याल से आंसर था मेरे पास. आई थिंक आई हैव लॉस्ट इट समवेयर, बट कोई नहीं. लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट समहाउ. ओके, नॉट दिस. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट पीपल. एंड बाय द वे मीनवाइल फाइनल स्कोर भी बता दीजिए यार क्या होने वाला है. आर्सेनल ज़ूरिक क्या होने वाला है, एज वेल एज मैनचेस्टर यूनाइटेड जो लोग लेट आए हैं. एब्सोल्युटली. चलो कोई नहीं, मैं शायद आई हैव समहाउ मिस्ड इट समवेयर. बट बेसिकली ना, विल ही एक्चुअली बी वेलकमिंग और नॉट, आई डोंट नो. टाइम विल टेल. आई डोंट नो. आप लोग बोलिए. मैंने हक दिया लास्ट में स्ट्रीम के, बट कोई नहीं. आई हैड एन आंसर टू इट. आई हैड समथिंग टू शेयर विद यू. मुझे मिल नहीं रहा है. कोई नहीं, मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में शेयर करता हूँ. होपफुली बिफोर दैट कुकरिया मिले नहीं पब्लिकली. लेट्स सी. Kukurea will be like, I'll start every match. No farewell for Tuchel. Disgusting. Yeah, that's the worst part. इसलिए हम हो सके तो हम करेंगे यार एक और वीडियो. Let's see. Kukurea will be elated. He was at good terms with Potter. Interesting. Tuchel had done a lot of things. Yeah, he didn't deserve it. But again, hats off to Tuchel. I have to keep on going. I have to say that. कोई नहीं, आई थिंक इट्स फॉर यू प्रोबेबली. चलो यार, मच लव. अगेन काफी लोग देख रहे हैं. मिलते हैं जल्दी. होपफुली फुटबॉल रहे, सो वील कम बैक विद द प्रॉपर प्रीव्यू स्ट्रीम, एफपीएल स्ट्रीम एंड व्हाट नॉट कल. लेकिन अगेन बिग अप टू जो भी ज्वाइन किया भाई. 300 लाइक्स हो गए होपफुली. एंड टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर. अगेन शाउट आउट टू हुएवर सपोर्टेड मी बीइंग ऑन सोनी टीवी टुडे. इट इज होपफुली सेकंड ऑफ मेनी. एंड टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर. अप द चेल्स. लेट्स गिव Potter a chance, and Tuchel, we love you bro, whatever it is. Bye.
Thanks for the neutrals as well, by the way.